Hey guys, very good afternoon again. Okay, so we'll start about with the session. So still a few people are joining in, but we think we are already past time. We will start off with the session. So a quick introduction about myself. My name is Arshan Hassan, and I'm one of the co-founders at Alma Better. And prior to Alma Better, I was working as a data scientist myself. So I have like over 7+ years of experience as a data scientist. So that's a little bit about me. To give you a little bit context around today's session, what we will essentially be trying to cover is basis whatever experience we get at Alma Better with our students going for interviews in today's market, right? So every day interviews keep on happening at Alma Better, different hiring partners, different recruiters keep on interviewing our candidates, and this is like a daily process at Alma Better. So, basis that, we have prepared a small master class in order to give you guys a fair idea on how to crack data science interviews at top product companies in today's context. So, broadly, what all things we will cover. So, if I just quickly briefly summarize the agenda for today's masterclass. So first, we will try to understand that what are the data science use cases at top product companies, why there are so many hirings going on in data science, how has the field of data science itself evolved. Post that, we will discuss upon what are the kind of skills and qualifications that you need in 2024 to be a data scientist. So things have evolved in this field also. What used to happen before, like 5 years before, and what is happening today is very different. So we will touch base upon that part. Then we will go through briefly about the interview process, like how does a standard interview process looks like, and this again is very realistic and very updated in terms of the current ongoing process post COVID, right? How the interview process have evolved post COVID, and what is the current standard process. Again, this comes from our experience of placing students at Alma Better. So that will be it. And then towards the end, we will discuss some sample interview questions and type of case study questions. So overall idea is that within next 50 to 60 minutes, I'll try to give you guys a holistic perspective on how to take an approach in data science, how the data science field itself is evolving, what are the skills you need, what are the salaries you can expect, and basically if you are looking for or you are currently exploring a career in data science, no matter wherever you are interested in pursuing it, you're interested in pursuing it at Alma Better or anywhere else, right? It doesn't matter. Today's masterclass is agnostic of that fact, and the overall idea is that you guys get an holistic idea of how things will be moving. So stay with me till the end. Next 50-60 minutes will actually be helpful for you in terms of getting insight around how things are moving and what is the right kind of approach, and to get like most of your burning questions answered around the field of data science. So that is the plan. That is the plan for today's masterclass. Let me. I think I just introduced myself. So this is a live session, guys. Currently, I am also live, and this is not a recorded lecture. So let's keep this session interactive. Uh, I think a lot of people have joined us in. So what I would like to know is if we can have a quick round of introduction. So guys, do let me know which city have you joined us in from, and what is your preferred mode of communication for this masterclass, whether it is English, Hindi, and which city have you joined in from. So go to the chat section, which you might be seeing on the bottom right hand of your screen, uh, and just type in your city and uh, preferred mode of communication. Alka from Patiala, preferred mode of communication is English. Hey Alka, welcome to the session. I hope you get to learn something fruitful out of today's session. Yes, guys, please go on. We'll keep it interactive, guys, and chat is something that you guys will be using on the go itself. So whenever I'm presenting, I'm talking about certain topics, certain segments. So meanwhile, what you guys can do is, if you guys have any doubt, any queries, contextual to the topic that we are discussing, feel free to post about it in the chat section, and I'll pick it up on the go. So every 10 minutes, I will be reviewing the chat section, and I will try to answer your queries. In case you have any Alma Better course specific queries, hold that to the end
So the initial masterclass is agnostic of the fact that which course you will be joining. It is more about getting an insight about how data science career itself is evolving. Towards the end, we will have admission counselors from Alma Better who will briefly guide you on the exact course structure, what are the dashboard look like, how does a student journey looks like at Alma Better, and any Alma Better specific question will be catered towards the end. But first 50 to 60 minutes, we'll spend time mostly to understand the holistic overview of how the data science career itself is evolving and how you guys can crack data science interviews in 2024. Vishal Kulkarni, welcome. Vishal is from Hyderabad. English is your preferred mode of communication. Nikhil Guleria from Himachal. Welcome, Nikhil. Welcome to the session. Shoaib Akhtar from Gorakhpur. Kushal from Bangalore. Great. I am also from Bangalore, guys. Ajaz Bashir from Kashmir. So I think most of you are interested in English. Nikhil from Chandigarh, हिंदी ओके शोएब अख्तर हिंदी सो अ फ्यू पीपल वांट हिंदी आल्सो तो ठीक है मैं थोड़ा सा मिक्स रखूंगा बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा आइडिया इज टू एसेंशियली गिव यू द मैसेज लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कि आप लोगों को एक होलिस्टिक आइडिया मिलना चाहिए कि डेटा साइंस का करियर कैसे इवॉल्व हो रहा है पीयूष राव फ्रॉम जबलपुर वेलकम पीयूष अफजोन बख्तियार फ्रॉम दिल्ली welcome Afzone, welcome Piyush, Sandeep from Patna. Okay, great. ठीक है, so I think a lot of people have joined us in, and I assume that whoever has joined us in, these are like everyone of you are interested in pursuing a career in data science. So my honest effort today will be to help you guys on that front and to help you guys give the right perspective, unbiased perspective around how things are moving, and then you guys are like uh, will be having a great approach towards taking the right kind of call. ठीक है. Hmm. Great. So data science use cases at different top product companies, right? So first of all, it is very important for us to understand that why data science is evolving at such a fast pace, right? So 5 years, 7 years before, data science used to be more like an auxiliary function, an R&D function where people used to do some kind of R&D, and only it used to exist at top MNCs, right? Top product companies. But today, things have changed. Today, data science as a team, as an use case, is built into the direct revenue structures of all the team. So, if we take, for example, data science use cases, SG, I think you can put your query on chat, right? I'll look it up every 10 minutes. So, guys, if you guys have any query in between the session, feel free to put it up on chat. I'll be taking it up every 5 to 10 minutes. सो दैट इज व्हाट आई वाज saying. तो वही मैं चीज़ मैं बता रहा था कि पहले अभी से 7 साल 8 साल पहले डेटा साइंस एक ऑक्सिलरी फंक्शन हुआ करता था जहाँ पे people used to have teams, people used to do on some R&D project, but now those days are gone, right? Today it is like very crucial to revenue. तो Apple का example ले, right? Apple की Face ID technology. What is that? That is nothing but a specific model recognition, right? There's a specific face recognition model that is deployed, and it is deployed across all Apple devices, right? Handwriting recognition, right? App library suggestions कि आप क्या क्या चीज़ें देखते हो, ट्रांसलेट फीचर, राइट, जहाँ पे एनएलपी मॉडल्स यूज हो रहे हैं. आप एप्पल इज लाइक प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, राइट, एंड हर कंट्री में हर लैंग्वेज में रियल टाइम कंटेंट जनरेट करना लोकल लैंग्वेज में, राइट, उनका यूआई एवरीथिंग इन लोकल लैंग्वेज, सो दैट बिकम्स डिफिकल्ट. So these are the use cases which solidify our belief that
टुडे इट इज इम्पॉसिबल फॉर एप्पल टू ऑपरेट विदाउट अ डेटा साइंस टीम। अगर वो एनएलपी हटा देते हैं, अगर वो फेस आईडी रिकॉग्निशन हटा देते हैं, रिकमेंडेशन मॉडल्स हटा देते हैं जो कि ऐप लाइब्रेरी सजेशंस करते हैं, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन हटा देते हैं, which is nothing but image to text models, right? So all of these are data science use cases which are heavily dependent. तो अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एप्पल कैन ऑपरेट विदाउट अ डेटा साइंस टीम और अ डेटा साइंस यूज केस, राइट? अभी से 10 साल पहले इट वाज स्टिल डूएबल. It was basically softwares, hard coded softwares that used to run on mobile devices. But today it's data science which has replaced or maybe have created a layer on top of that, right? On top of existing software development, उसके ऊपर एक data science का layer build हो चुका है जो कि अब हटाना impossible है. And that is why people want कि people understand, right, कि now companies can't operate without data science team. So it is no more an auxiliary function. अब mainstream बन चुका है, अब direct revenue drive कर रहा है. Data scientists today interact with business teams, CXOs, right? They are interacting, involved in discussions with product teams, because अब ऐसा है ही नहीं कि डेटा साइंस टीम साइलोज में बैठ के R&D कर रही है. अभी से 10 साल पहले ऐसे हुआ करता था. बट इन 2024 डेटा साइंटिस्ट आर एज इम्पॉर्टेंट एज एनी अदर फंक्शन एंड इट इज ग्रोइंग. तो अगर एक कंपनी बिना सेल्स और बिना मार्केटिंग के ऑपरेट नहीं कर सकती है, तो आज वो बिना डेटा साइंस के भी ऑपरेट नहीं कर सकती है. अभी से 5 साल 10 साल पहले प्रोबेबली डेटा साइंस रखो नहीं रखो, इट वाज एन ऑप्शन, बट टुडे इट इज अ मैंडेटरी थिंग. एंड इसके और भी एग्जांपल्स हैं, सो विल डिस्कस. जैसे कि मेटा, राइट? अगर मैं मेटा का भी एग्जांपल लूँ, तो मेटा में सबसे सबसे कोर फीचर क्या है इनका, राइट? न्यूज़ एंड एड फीड पर्सनलाइजेशन. तो मुझे जो रील्स दिखता है, आपको जो रील्स दिखते हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे जो पोस्ट दिखते हैं, द पोस्ट दैट यू गाइस सी, the ads that I see, the ads that you guys see are very custom, right? It differs from person to person. So for example, अगर आप you are sitting at the same place with your sibling who is sitting in the same environment, still the reel suggestion for you will be different as compared to your sibling. So that is the level of personalization that has happened. And what is this? This is nothing but very high level recommendation engines, recommendation models working in the backend. And Meta का 90% revenue comes from ads, comes from the ad personalization that they do. So such a big company dependent heavily on data science use case, right? So data science हटा दो आप मेटा से, मेटा is nothing, as simple as that. इमेज एंड वीडियो रिकॉग्निशन इज अनदर यूज केस, जहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल्स, ये सब चीज़ें लगी होती है जिनसे वो इमोशंस आइडेंटिफाई करते हैं एंड आपको राइट काइंड ऑफ वीडियोस दिखाते हैं फॉर योर सेल्फ, राइट? So if I'm happy, I'm in a good mood, and I'm kind of liking the videos that show or emote that feeling, right? So basis object detection, they will be able to identify more such videos and push that in your feed, right? Language translation, again, Meta, Facebook, Instagram are apps that essentially are used almost across the globe. इंडिया में ही कम से कम 10 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. रियल टाइम कंटेंट गेटिंग जनरेटेड एंड गेटिंग ट्रांसलेटेड इन लोकल लैंग्वेज. डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू डू इट विदाउट अ data science use case? So large NLP models working in the background to actually facilitate this. तो पॉसिबल ही नहीं है कि इतना रियल टाइम कंटेंट, देयर आर बिलियंस ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा बीइंग जनरेटेड एवरी आवर, राइट? एंड शोइंग दैट कंटेंट इन एवरी लैंग्वेज, राइट? कोई मैनुअल इंसान बैठ के वो ट्रांसलेट कर ही नहीं सकता. यू नीड एनएलपी मॉडल्स एट द बैक एंड टू बी एबल टू make it serviceable across communities, right? Europe there are so many language. So no matter if you put a post on Instagram today, right, within seconds that post can be fetched in 100 different languages, right? So obviously there is no human doing it. So what is it? It's data science, it's NLPs, it's large language models working in the background to be able to actually take care of these things. सो कुल मिला के मतलब नटशेल में बात ये है कि डेटा साइंस यूज केस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है. अगर आप मेटा से डेटा साइंस हटा दो तो इनका 90% रेवेन्यू खत्म हो जाता है. तो एक टाइम के लिए आप बोल सकते हो कि ये अपनी मार्केटिंग टीम बंद कर सकते हैं, लेकिन डेटा साइंस टीम को क्लोज डाउन नहीं कर सकते हैं. दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज ग्रोइंग. एंड व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी लॉजिकल, वेरी वेरी नेचुरल. इवन यू गाइज अंडरस्टैंड दैट कि जो हो रहा है वो सही है. बहुत बार हम चीज़ें मिस कर जाते हैं, बहुत सटल इंट्रिकेट फीचर्स बिल्ड होते हैं, but this is how it is happening, right? Google another example. So Google is another good example for me, like how it is using data science. चाहे वो Google Photos हो, Google Translate हो, Google Ads हो, right? Google Photos में आपका इमेज रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन लगा हुआ है. Google Translate में NLP मॉडल्स हैं, स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल्स हैं. Google Ads में
नेक्स्ट लेवल हाई लेवल रिकमेंडेशन इंजन्स यूज हो रहे हैं. गूगल सर्च में बॉट predictors, advanced recommendation models, and many more, right? So the idea is that Google's entire ecosystem is today heavily dependent on data science. And ये सब जो कंपनीज है ये तो काफी टाइम से डेटा साइंस को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है अपने कल्चर में, एंड अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को बिल्ड किया है डेटा साइंस यूज केसेस के अराउंड. ठीक है. नाउ दिस इज लाइक द इम्पोर्टेंस. अब हम थोड़ा सा अगर ई कॉमर्स कंपनीज के एग्जांपल लें, सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सम इंडियन कंपनीज एज वेल इन दिस. तो इट्स नॉट ओनली दैट गूगल, मेटा एंड एप्पल एंड amazon आर द कंपनीज दैट आर यूजिंग इट, बट उसके बियॉन्ड भी चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं. आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, फ्लिपकार्ट के होम पेज पे जो आपको प्रोडक्ट्स दिखते हैं दैट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन. इफ आई ओपन माई amazon होम पेज और माई फ्लिपकार्ट ऐप फॉर दैट मैटर, the product recommendation that I will see will be very different as compared to what you will see or anyone will see, no matter how close two people are, they are living in the same area, they are having the same job, same thing. No matter, matlab, no two people, it's very difficult for two people to have the exact same product being recommended. And why is that happening? Because it is being because recommendation systems are now mainstream. पहले हुआ करता था, अभी से जब पहले 10 साल पहले जब फ्लिपकार्ट वाज इन इट्स इनिशियल डेज, right, or Myntra was in its initial days, it used to happen that it used to have static pages and listings done on the page. But today, if you do static listings, your revenue will be hit. You will be out of competition in the market. Competitors will take your market share, as simple as that. So recommendation systems are mandatory today, right? So और भी ऐसे बहुत सारे सटल यूज केसेस हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, जैसे कि इमेज एंड वॉइस रिकॉग्निशन है. तो पहले आप सर्च कैसे करते थे? आपको अगर टी शर्ट खरीदना होता था तो यू विल गो एंड टाइप एंड सर्च, राइट, टी शर्ट ब्लू, ऐसे करके आप सर्च करोगे, फिर रिजल्ट्स आते थे, एंड देन बेसिकली यू विल बी एबल टू नेविगेट थ्रू दोज रिजल्ट्स. बट नाउ यू कैन डू इट वाया इमेज ऑल्सो, राइट. आपके पास एक सैम्पल टी शर्ट है, आप उसकी फोटो खींच लो एंड फ्लिपकार्ट विल शो यू सिमिलर टी शर्ट्स, राइट. वॉइस रिकॉग्निशन, आपको टाइप करने की जरूरत भी नहीं है, आप बस लॉन्ग प्रेस करो माइक बटन पे एंड यू जस्ट रिक्वेस्ट फॉर वट एवर यू आर विलिंग टू shop for. You can basically give voice commands. So how are these things getting enabled? Voice command is nothing but your speech to text model working, right, कि आपका speech identify करके उसे text में convert कर रहा है. This is a clear cut data science use case. Image image based search is again clear cut data science use case, जहाँ पे आप image based similar images extract कर रहे हो. तो ये सब क्या है? सब these are nothing but clear cut straightforward data science use cases being deployed into subtle features. एंड ओवर टाइम इन लास्ट 3-4 years ऐसे सटल फीचर्स बिल्ड हो गए हैं कि नाउ डेटा साइंस हैज बिकम अ मैंडेटरी थिंग फॉर ऑल दिस कंपनीज. अब हो ही नहीं सकता कि बिना डेटा साइंस के ये लोग आगे बढ़ पाएंगे या फिर बिना डेटा साइंस के ऑपरेट कर पाएंगे, बिकॉज कंपटीशन हाई है. अगर फ्लिपकार्ट डिसाइड करती है कि हम डेटा साइंस यूज केसेस नहीं रखेंगे या फिर डेटा साइंस टीम को छोटी कर देते हैं, वी विल नॉट हैव एज मेनी डेटा साइंस फीचर्स, राइट, स्मॉल स्मॉल फीचर्स. So they will be running out of competition because other players are going to do it. So if one player picks it up, everyone has to do it. That's how the market operates, right? So ये सब एग्जांपल हैं. सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, चैटबॉट डेवलपमेंट्स, आजकल सपोर्ट वाले सारे चैट्स आपके इसके थ्रू ही हो रहे हैं, राइट, वाया नॉर्मल मैसेजेस चैट. सो ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डेटा साइंस यूज केसेस इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री. आई होप आई एम मेकिंग सेंस गाइज. आप लोगों को समझ में आ रही है चीज़ें? गिव मी अ थम्स अप इफ आई एम ऑडिबल एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू टिल नाउ. ठीक है, ग्रेट ग्रेट. अगर कुछ आपको डाउट हो स्पेसिफिक, सो लेट मी रिव्यू द चैट ऑल्सो वंस. ओके, सो वी हैव अ फ्यू न्यू folks joining in. दीपक कुशवाहा फ्रॉम गोरखपुर, वेलकम दीपक. बाबा शंकर राहुल, ग्रेट गाइस. ठीक है. सो तो कुल मिलाकर के अभी तक जो मेरा एफर्ट है वो बेसिकली आप लोगों को यही समझाने में है कि नो मैटर विच एवर इंडस्ट्री इट इज, टुडे डेटा साइंस हैज बिकम अ मैंडेटरी फील्ड. अब वो ऑप्शनल नहीं रहा. मतलब जैसे सेल्स और मार्केटिंग चाहिए होती है डिफरेंट कंपनीज में, वैसे डेटा साइंस भी चाहिए अब. इट्स नो मोर ऑप्शनल एंड दैट्स व्हाई इट इज ग्रोइंग. एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द न्यूएस्ट फील्ड दैट हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट.
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की आप एग्जांपल ले लो, नेटफ्लिक्स, प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार। इनका सबसे फंडामेंटल यूज केस है कंटेंट रिकमेंडेशन, कि मुझे जो कंटेंट रिकमेंड किया जा रहा है दैट इज वेरी स्पेसिफिक टू माय यूजर बिहेवियर, माय डेटा, माय हिस्टोरिक डेटा, व्हाट काइंड ऑफ सर्चेस आई हैव डन हिस्टोरिकली, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आई हैव वॉच्ड हिस्टोरिकली, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? ऑटो जनरेटेड थंबनेल्स, सबटाइटल जनरेशन, राइट? स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल्स लगे हुए हैं जो कि जो वॉइस आ रहा है वहाँ पे मूवी में, शोज में, उसका वो ऑटोमेटिकली सबटाइटल्स जनरेट कर दे रहा है। एंड देन there are people who have essentially fine tuned these subtitles and make it appropriate, because anyway speech to text models can be 95-98% accurate depending on which language it is in. For example, English language movies में subtitle generation via speech to text models will have greater than 95% accuracy. So थोड़ा बहुत मैनुअल इंटरवेंशन तो स्टिल चाहिए अभी, बट द आइडिया इज दैट इट हैज सेव्ड द एफर्ट बाय 95%, राइट? तो आपको पूरी मूवीज के सबटाइटल्स खुद बैठ के नहीं लिखने हैं, वहाँ पे जनरेट हो जा रही है चीज़ें। तो दीज आर द यूज केसेस दैट आर नाउ सो कोर टू द बिजनेस, राइट? सो कोर टू डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट देम आउट। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि डेटा साइंस टीम इन एनी कंपनी विल बी एन ऑप्शनल टीम टुडे। अभी से 5 साल पहले, 10 साल पहले ऐसा होता था कि प्रोबेबली अगर टीम को डाउनसाइज करना है, अगर रेवेन्यू का प्रेशर है, तो डेटा साइंस टीम को हटा देते हैं, बिकॉज इट इज एनीवेज एन R&D टीम। बट अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आप अब डेटा साइंस टीम को हटाते हो तो आपका आपका बिजनेस ही इम्पैक्ट हो जाता है सीधा। तो अब डेटा साइंटिस्ट काफ़ी CXOs, CEOs, टॉप लीडरशिप टीम से इंटरैक्ट करते हैं, उनके साथ चीज़ें सॉर्ट करते हैं, दैट इज हाउ इट गोज। अब और भी एग्जांपल लें, फूड टेक, राइट? स्विगी जोमेटो के अगर हम एग्जांपल ले लें तो क्या है, स्विगी जोमेटो इज नथिंग बट इसमें कितने हेविली डिप्लॉयड हैं आपके रिकमेंडेशन मॉडल्स, राइट? द फूड्स दैट आई सी, द फूड दैट यू सी, नो मैटर इफ इवन इफ यू आर इन द सेम एरिया, इज डिफरेंट फॉर अस, राइट? वॉइस सर्च फीचर्स एंड बहुत सारे सटल सटल यूज केसेस हैं, फ्रॉडुलेंट कैश ट्रांजैक्शंस, प्रेडिक्शंस, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स एग्जिस्ट इन द फूड टेक इंडस्ट्री, राइट? फिनटेक की अगर हम एग्जांपल लें तो फिनटेक में आपका बेसिकली अंडर राइटिंग इंजन्स, अगर आपको लोन लेना है तो अब आपको बैंक जा करके लोन के लिए अप्लाई करके 7 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है। देर आर फिनटेक प्लेटफॉर्म्स दैट आर गिविंग यू लोन विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। आप अप्लाई करते हो, आपका क्रेडिट डेटा फैच होता है, आपका SMS ट्रांजैक्शन फैच होता है, आपके सारे पास्ट पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री फैच होती है, एंड बेसिस ऑल ऑफ दैट डेटा गोज एज इनपुट टू दीज अंडर राइटिंग मॉडल्स, एंड उसके हिसाब से वो मॉडल बता देता है विद इन 30 सेकेंड दैट यू आर एलिजिबल फॉर लोन और नॉट, एंड इफ यू आर एलिजिबल एट व्हाट वैल्यू यू आर एलिजिबल फॉर। सो अब 15-20 सेकंड में हो रहा है। तो अगर आप आज जा करके फिनटेक स्टार्टअप स्टार्ट करते हो तो डू यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू डू इट विदाउट these underwriting models engines? No. So that is the fundamental use case, guys. So across all industry, तो मैंने काफी सारे इंडस्ट्रीज के एग्जांपल दिए आपको अभी तक, एंड across all industries we have seen the same trend. Now, as a result of this, what has happened that the data science field itself has started growing. More and more adoption is happening. Today, like even startups are having data science team. पहले ऐसा होता था कि startups को तो नहीं required था. Data science team used to be an elite thing only for top MNCs. For example, Google, Facebook, Amazon, Apple, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज में ही डेटा साइंस टीम्स होते थे। बट अब डेटा साइंस टीम्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टार्टअप्स ऑल्सो। फिनटेक स्टार्टअप है, एडटेक स्टार्टअप है, फूड टेक स्टार्टअप है, हर जगह डेटा साइंस टीम्स तो है ही है, रिक्वायर्ड हो गई हैं, बिकॉज मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है। तो इसके हिसाब से डेटा साइंस का प्रेडिक्शन कैसा है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा आउटलुक दिखाना चाहता हूँ, एंड अगेन आई विल बी यूजिंग अनबायस्ड रिसोर्सेज फॉर दिस, because lot of times I have seen that there are articles that are biased to the companies that are publishing it. For example, अगर आप किसी edtech platform में कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ऑफर कर रहा है तो दे विल show that digital marketing field is going to grow 100x in 5 years, and these data are not correct. They try to give you an unbiased picture. So never follow stats of or data about how the market is growing by articles from any company or any institution that may have any biasness towards that data, because they will then try to bias that data and picture it in their favor. So today what I will be using over here are two very unbiased resources. So the first one is IBEF. तो मैं पहले बताता हूँ, इंडियन आउटलुक दूंगा आपको IBF क्या है।
So what is IBF, right? So you can go to this link. I will also ping this link on the chat. ठीक है, आप इसे विजिट भी कर सकते हो, बट मैं पहले बता देता हूँ व्हाट इज आईबीएफ. सो आईबीएफ, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, इज अ ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडिया एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड ट्रस्ट है, एंड इसका काम होता है एज अ नॉलेज सेंटर फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर्स, इंटरनेशनल पॉलिसी मेकर्स एंड वर्ल्ड मीडिया, seeking updated, accurate and comprehensive information on the Indian economy, states and sectors. ठीक है. तो ये हो गई कि व्हाट इज आईबीएफ. सो मैंने आपको लिंक भी पिंक कर दिया. तो दिस इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो द आइडिया, द रीजन दैट आई एम चूजिंग their articles for reference is because I know that IBF will not have any biasness towards anything. Like they will not quote any numbers wrong because they're not a institution that are offering courses in data science, right? So this is IBF. अब इनका प्रेडिक्शन क्या है उसका भी एक आर्टिकल है. सो दिस इज द आर्टिकल. इसका भी लिंक मैं पहले आप लोगों को दे देता हूँ, सो दैट यू ऑल्सो गाइज कैन फील फ्री टू गो थ्रू इट. तो मैंने चैट में डाल दिया है. But what is this, right? So what they are saying, so this article is like a recent article only, made 2023 में last updated है. So मैं this article is a bit long, so I'll not go through each and every line. You guys can go. But the overall idea is that how it is predicting that the AI is expected to grow. So the market for AI is expected to reach $7.8 billion by 2025 in India. ठीक है. AI will grow at a rate of 20.2% CAGR. तो ओवरऑल आइडिया इज दैट जो चीज़ें मैं बताया आप लोगों को, राइट, कि यहाँ पे एसेंशियली डिफरेंट कंपनीज में कैसे अडॉप्शन हो रहा है, वही चीज आईबीएफ ऑल्सो इज टेलिंग. सो फील फ्री टू रीड दिस आर्टिकल एंड गेट एन अनबायस्ड आउटलुक on how the Indian economy is growing in terms of data science and AI related fields. So उससे आप एक fair idea लगा पाओगे कि how is this career going to make sense in the long term for you. Okay, so a very unbiased article coming directly from government of India. So I hope this will give you guys a clear perspective around how things are moving. थोड़ा सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं. चलिए, ये तो इंडिया की बात हो गई कि इंडिया का प्रेडिक्शन कैसा है अबाउट ग्रोइंग. हाउ इज ग्लोबल आउटलुक हैपनिंग. So for that we will use an article from US Bureau of Labor Statistics. तो पहले मैं बता देता हूँ कि US Bureau of Labor Statistics क्या है. So this is again an official website of the United States government. So this is not owned by any US company or any European company. There is no company owning it. This is directly owned by the government of United States. ठीक है. US Bureau of Labor Statistics. So essentially ये लोग क्या करते हैं, different job roles का प्रिडिक्शन करते हैं कि हाउ द मार्केट इज ग्रोइंग, राइट. सो उनका डेटा साइंटिस्ट का जो कैटेगरी है उसमें जो उन्होंने प्रिडिक्शन किया है वो है दैट द जॉब आउटलुक बिटवीन 2022 टू 2032 will grow at a rate of 35%, which is much faster than the average. ठीक है. तो ये दिस इज कमिंग अगेन फ्रॉम यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स. एंड अगर इनका आप जॉब आउटलुक वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि उन्होंने क्या क्या प्रेडिक्शन किए हैं. तो मैं ये वाला चार्ट है ये आपको हाईलाइट कर देता हूँ क्विकली. तो ऑल ऑक्यूपेशंस विल ग्रो एट अ रेट ऑफ 3%. मैथमेटिकल साइंस ऑक्यूपेशंस, व्हिच मींस ऑक्यूपेशंस दैट आर बेस्ड अराउंड मैथमेटिकल साइंस, दे विल ग्रो अराउंड 29%. तो इसमें बहुत सारे आपके इंजीनियरिंग रोल्स हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले रोल्स हो गए, तो ऑल ऑफ दोस कंबाइंड. एंड डेटा साइंटिस्ट एक्सेप्शनली दे आर प्रेडिक्टिंग दैट इट विल ग्रो एट अ रेट ऑफ 35%. ठीक है. So this is another article that I will share link with you guys so that you guys have an idea, an unbiased idea. तो आप लोग read through करिए whenever you guys have free time, whenever you guys are doing some decision making, read through it and get an idea around how things are moving and how what are the unbiased predictions happening. So never go for biased predictions, but try to get an unbiased view on how things are moving all along. Okay. अब वापस आते हैं अपने स्लाइड्स पे. So abhi tak clear hai guys. Let me just take a few questions in case you guys have any questions. Sir, are there data science jobs in government departments? Piyush Roy is asking. So Piyush, yes, I think recently मैंने देखा income tax department में भी data analyst वाले roles open थे, and भी कुछ गवर्नमेंट institutions हैं that are hiring
or probably are looking for data science job. So सी मतलब अगर टॉप प्रोडक्ट कंपनीज में यूज केस बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट में भी बढ़ेगा. गवर्नमेंट में थिंग्स हैपन विद अ लैग, राइट? तो इंटरनेट ऑल्सो व्हेन इट केम इन, इट फर्स्ट वाज अडॉप्टेड इन प्राइवेट सेक्टर हेविली, एंड पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट यूनिट्स में अडॉप्शन में थोड़ा लैग होता है, बिकॉज मतलब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दैट्स हाउ द गवर्नमेंट एजेंसीज वर्क, देयर इज सम लैग दैट दे सी. तो प्रोबेबली जो चीज जो इन्फ्लक्स हम अभी प्राइवेट सेक्टर में देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, उस चीज को गवर्नमेंट सेक्टर्स में रेप्लिकेट होने में 1-2 साल का लैग रहेगा, बिकॉज गवर्नमेंट एजेंसीज में थोड़ा ब्यूरोक्रेसी ज्यादा होती है, राइट? एवरीथिंग, एवरी चेंज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अप्रूवल्स, टॉप डाउन अप्रोच होता है, एंड दैट्स व्हाई थिंग्स आर डिलेड. सो थोड़े बहुत ओपनिंग्स आने लगे हैं, बट विद टाइम more and more of that will happen, because more and more adoption of data science use cases across government organizations will also be baked in. So yes, I am very hopeful about the fact that data science jobs in government departments भी आएंगे, आना already शुरू हो गए हैं, but wider adoption will take some more time because there is lag in that also. I hope that answers the question. चलिए फिर आगे डिस्कस करते हैं रिक्वायर्ड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस. अब समझते हैं कि चलिए डेटा साइंस तो हमने समझ लिया कि वाई डेटा साइंस, क्या प्रोडक्ट यूज केसेस हैं, प्रोडक्ट कंपनीज में क्या किस टाइप के काम है डेटा साइंटिस्ट के. बट अब रिक्वायर्ड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस में व्हाट आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड इज क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. ठीक है. तो अगर मैं टॉप प्रोडक्ट कंपनीज की बात करूं, Nikhil is asking, sir, a placement. Nikhil, so this is like a course specific question. So we have admission counselors who will guide you on the entire process. ठीक है, कि कैसे आप कोर्स ज्वाइन करते हो, कैसे पढ़ते हो, क्या प्लेसमेंट गारंटी होती है, क्या इनकम शेयर एग्रीमेंट होता है, वो एंटायर चीज के लिए देयर आर एडमिशन काउंसलर्स विल गाइड यू. लेट मी फर्स्ट क्लोज द सेशन एंड गिव यू गाइस अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ हाउ द डेटा साइंस मार्केट इज लुकिंग लाइक. ठीक है, स्पेसिफिक टू डेटा साइंस इंटरव्यूज, and then we will discuss that, right? Obviously there are everyday placements are happening. आप LinkedIn के पेज खोल करके देख लो alma better का, every day there are candidates getting placed. So placement is something that is going to happen because वो market भी है, demand भी है, and अगर आप right skill sets own करते हो तो you will obviously get placed. Why not? और ये चीज जो आपने लिखा है कि आप मतलब आप करवा दोगे, मैं नहीं करवाऊंगा यार. सो निखिल, मैं कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो उसके बदले मैं आपको प्लेसमेंट दे रहा हूँ. आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो आपको एक राइट इकोसिस्टम मिल रहा है, राइट लर्निंग का एटमॉस्फेयर मिल रहा है, राइट प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, राइट मेंटर्स मिल रहे हैं, राइट प्लेसमेंट टीम मिल रही है जो कि आपको सपोर्ट कर रही हो. एट द एंड ऑफ द डे प्लेसमेंट आप अपना खुद ही लगवाओगे. हम आपको काबिल बनाएंगे कि आप अपना प्लेसमेंट लगा लो, लेकिन एल्मा बेटर आपको पैसे के बदले प्लेसमेंट नहीं दे रहा है. तो वी आर आई एम नॉट एसेंशियली हैविंग an institution that is selling placements. It is an institution that sells or essentially equips with you with the right set of qualities, capabilities, skill sets that you get placed with the right terms, right? तो एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करते हो, आप कितना एफर्ट डालते हो, आप कितने सीरियस हो अपने करियर के ऊपर, वो सब चीजें 90% मैटर करती हैं, राइट? सो दैट इज अ थॉट प्रोसेस. सो मैं करवा दूंगा, इस सवाल का जवाब है कि मैं तो नहीं करवा रहा हूँ. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. आप खुद का करवा रहे हो, अपना प्लेसमेंट खुद ही करा रहे हो. मैं आपको हेल्प करूंगा इन एवरी पॉसिबल वे. Our recruiters, our network of hiring partners, our course, our curriculum, teachers, mentors, projects, resume building sessions, all of this will be the tools that we will be giving you to enable you to get placements. और अगर कोई इंस्टीट्यूट बोलता है कि आप हाँ मैं लगवा दूंगा, तो भाई उस इंस्टीट्यूट की बात मानना भी नहीं. no one uh, no one will essentially take money from you and get you placed. It's your skill set at the end of the day that will matter, and if you are confident and if you are clear on that, then only think about pursuing any course for that matter. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, टॉप प्रोडक्ट कंपनीज प्रेफर मेरिटोक्रेसी ओवर एनीथिंग एल्स. तो ये हमने जनरली देखा है कि टॉप कंपनीज में काफी एलाबोरेट इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है, जहाँ पे वो काफी इंटरनली इवैल्यूएट करते हैं कि बंदे का स्किल सेट कैसा है. तो क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, राइट? टेक्निकल स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, सॉफ्ट स्किल्स, एंड देन पॉइंट नंबर 4 से 6 में जो मैंने चीजें लिख रखी हैं, दीज आर लाइक
important today because the data science field is evolving in that way. Ability to optimize problems, quick learner, multitasker, think out of the box, right? तो ये सब वो सॉफ्ट स्किल्स के बियॉन्ड वाली चीजें हैं जो कि आपको ना सिर्फ गेटिंग अ जॉब बट ऑल्सो ग्रोइंग एज अ डेटा साइंटिस्ट। तो अगर आपका ड्रीम है कि मैं मतलब चीफ डेटा साइंटिस्ट बनूं 10 साल में, या फिर सीनियर डेटा साइंटिस्ट बनूं, टीम लीड बनूं, एंड आपका बस बहुत मायोपिक थॉट प्रोसेस नहीं है कि बस मैं ये करूं, सो देन दैट इज व्हेन यू एक्चुअली need to have additional skills also. But in terms of core skills, there are three core skills: technical skills, projects, and soft skills, right? That essentially will be required to be a data scientist. तो हम इन तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन तीनों में क्या चीजें होती हैं एंड क्या होता है। तो टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो टेक्निकल स्किल्स को हम यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में बांट रहे हैं, राइट? प्रोग्रामिंग स्किल्स, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा अल्मा बेटर का डैशबोर्ड दिखा करके भी बताना चाहूंगा। सो इफ यू गो टू अल्मा बेटर्स लर्न, राइट, फुल स्टैक डेटा साइंस कोर्स, एंड अगर आप कंटिन्यू कर लर्निंग करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे कि अब 7 मॉड्यूल्स हैं, राइट? तो मैंने बताया, देखो यहाँ पे क्या क्या चीज चाहिए: प्रोग्रामिंग स्किल्स, रिलेशनल डेटाबेस। तो पहले हम प्रोग्रामिंग स्किल्स पे आते हैं। तो प्रोग्रामिंग स्किल्स क्या है? प्रोग्रामिंग स्किल्स इज लाइक मॉड्यूल 1 में जो चीजें कवर्ड है यहाँ पे: इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जहाँ पे आप पाइथन के बारे सीखते हो, और ऑपरेटर्स इन डेटा टाइप्स, राइट? एंड यहाँ पे सारे कोर्सेज उस टाइप के हैं। देन मॉड्यूल 2 इज ऑल्सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जहाँ पे आप न्यूमेरिकल प्रोग्रामिंग इन पाइथन सीखते हो, अबाउट लाइब्रेरीज, डेटा रैंगलिंग लाइब्रेरीज, पांडास एंड नमपाई काफी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज होती हैं फ्रॉम अ डेटा साइंटिस्ट परस्पेक्टिव। तो यहाँ पे आप देखते हो तो सारा कोर्स, वीडियो, कोडिंग असेसमेंट, एडिशनल रिसोर्सेज, सब कुछ रहता है। सो ऐसे करके आपका जो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 है, विच इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड न्यूमेरिकल प्रोग्रामिंग इन पाइथन, विच इज वर्थ लाइक 8 वीक्स ऑफ करिकुलम, ये दोनों अगर आप कर लेते हो तो आपका ये पहला बॉक्स ऑफ टेक्निकल स्किल्स चेक हो जाता है कि आप प्रोग्रामिंग स्किल्स आपको आती है। उसके बाद जो रिलेशनल डेटाबेस है, उसमें क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेसेस में आप बेसिकली यहाँ पे एसक्यूएल के बारे में सीखते हो ना। यू आर अ डेटा साइंटिस्ट, यू आर वर्किंग ऑन डेटा, राइट? सो डेटाबेसेस इज समथिंग दैट स्टोर्स डेटा, तो आपको डेटाबेसेस का अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनल डेटाबेसेस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मॉड्यूल 3 इज फुल्ली डिवोटेड टू दैट, जहाँ पे आप एसक्यूएल पे क्वेरीज कैसे लिखते हैं, एसक्यूएल बेसिक्स फॉर डेटा एनालिसिस, एडवांस्ड एसक्यूएल क्वेरीज, राइट? एंड यू लर्न things of all sort. So module 3 essentially covers this aspect of data visualization, sorry, relational databases. उसके बाद आता है डेटा विजुअलाइजेशन पे, राइट? डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है? सो डेटा विजुअलाइजेशन में बेसिकली आप जो भी आप डेटा पे काम करो सब विजुअलाइज कैसे करोगे? यू आर वर्क ऑन टूल्स लाइक पावर बीआई, टैबल्यू, डिफरेंट डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, राइट? सो दैट यू बिकम एन एक्सपर्ट ऑन हाउ टू प्रेजेंट योर डेटा इन अ मैनर दैट इट कैन बी प्रेजेंटेड, राइट? बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि अब डेटा साइंस टीम्स आर not working in silos. You have to present your analysis, your data to top management because it is driving business, it is driving revenue. So आप जो भी काम करोगे उसमें people from even top management will be interested in knowing कि what is happening in data science team. So that is why आपको सही से अपने डेटा को स्ट्रक्चर करना, प्रेजेंट करना is also an important. So the module 4 is totally based on that, which essentially covers this skill set. ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन। उसके बाद एक और चीज होती है स्टैटिस्टिक्स फॉर एमएल। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट मॉड्यूल 5 इन आवर कोर्स विच इज अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं: प्रोबेबिलिटीज, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, कॉन्फिडेंस इंटरवल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। एंड व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? ठीक है, तो आई थिंक आई मिस शेयरिंग द टैब, बट हाँ, ये जो मॉड्यूल 5 है इसकी बात कर रहा था मैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का बेसिक, प्रोबेबिलिटी का बेसिक सिखाया जाता है। एंड द होल आइडिया इज दैट क्योंकि जब आप लार्ज डेटा सेट्स पे काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि आप डेटा कैसे स्टैटिस्टिकली एनालाइज करोगे, उसे रिप्रेजेंट करोगे, सो दैट इट मेक्स सेंस फ्रॉम अ मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव ऑल्सो। सो मॉड्यूल 5 इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट। सो ये हो गया मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5। सो टेक्निकल स्किल्स में हमने कवर कर लिया
प्रोग्रामिंग स्किल्स, रिलेशनल डेटाबेसेस, डेटा विजुअलाइजेशन एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर एमएल। तो ये जो चार स्किल सेट्स हैं ये आप कवर कर लेते हो, विच इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट 5 मॉड्यूल्स ऑफ एल्मा बेटर कोर्स। तो फिर आप एक डेटा एनालिस्ट पोजीशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि डेटा एनालिस्ट के लिए कब हम एलिजिबल हो जाएंगे, डेटा साइंटिस्ट के लिए कब हो जाएंगे। तो आज मैं बहुत क्लियरली बताऊंगा। तो ये जो शुरुआत के चार टेक्निकल स्किल सेट्स हैं जो कि पहले 5 मॉड्यूल में कवर होते हैं, वो बेसिकली आप यहाँ पे कवर कर लोगे। ठीक है, ये फर्स्ट 5 मॉड्यूल्स में कवर हो जाएंगे। यश इज आस्किंग सर 7 मॉड्यूल्स कितने महीने में कर सकते हैं। सो जो यहाँ पे जो टाइमिंग लिखा हुआ है दैट इज स्टैंडर्ड टाइमिंग बेसिस लाइव लेक्चर्स की। वीक के 3 लाइव लेक्चर्स होंगे 2 घंटे ईच के, उसके हिसाब से दिस इज द टाइमिंग दैट हैज बीन मेंशन्ड। बट अगर बट ऑल द कंटेंट राइट इज आल्सो अवेलेबल इन लाइक बेस्ट क्वालिटी रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो जो भी बेस्ट लेक्चर्स हैं, बेस्ट फीडबैक वाले लेक्चर्स हैं, वो यहाँ पे लिस्टेड होते हैं। एंड अगर आप दिन में 5-6 घंटा लगा रहे हो, अगर आप फुल टाइम कर रहे हो, तो आप सेल्फ पेस मैनर में ये 5 मॉड्यूल या फिर पूरा 7 मॉड्यूल आप 3 महीने में भी कवर कर सकते हो। सो अलका, एज यू आर आस्किंग हाउ डेटा एनालिटिक्स इज डिफरेंट, तो मैंने जैसे कि बताया राइट, यहाँ पे जो आपको स्किल सेट्स दिख रहे हैं, तो अगर आपको ये चार स्किल सेट्स आते हैं, प्रोग्रामिंग स्किल्स आती है, रिलेशनल डेटाबेसेस आता है, डेटा विजुअलाइजेशन आता है, और स्टैटिस्टिक्स फॉर एमएल आता है, विच इज इक्विवेलेंट टू योर फर्स्ट 5 मॉड्यूल्स एट Alma Better. Introduction to computer programming, numerical programming in Python, relational databases, data visualization tools एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो ये फर्स्ट 5 मॉड्यूल्स हैं। अगर आपने इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज हासिल कर ली है तो यू विल बी एलिजिबल फॉर अ डेटा एनालिस्ट जॉब। तो यहाँ पे बेसिकली आपको मॉडलिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ एमएल मॉडल्स वगैरह में काम नहीं करना है, बट बेसिस एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, डेटाबेस का अंडरस्टैंडिंग और प्रोग्रामिंग स्किल्स होने चाहिए। तो आप डेटा एनालिस्ट के पोजीशन के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे किस टाइप के काम होंगे, आप डैशबोर्डिंग का काम करोगे या फिर यू विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन रियल टाइम रिपोर्ट्स, dashboards, right? Analyzing historic data, analyzing data for business use cases, so on and so forth. So ये हो गया डेटा एनालिस्ट। इसके बाद अगला जो स्किल सेट है टेक्निकल स्किल इज मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या है, वो यहाँ पे आता है मॉड्यूल 6 में, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग में यहाँ पे बेसिकली आप सारे एमएल एल्गोरिदम्स के बारे में सीखते हो। दिस इज वेयर एमएल स्टार्ट्स, दिस इज वेयर एक्चुअल एआई और एमएल स्टार्ट्स, राइट? जहाँ पे आप सुपरवाइज लर्निंग, तो रिग्रेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ट्रेन कैसे करते हैं डेटा को, बायस वेरियस ट्रेड ऑफ क्या होता है, कैसे आप अपना हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हो, कॉम्प्लेक्स मॉडल्स कैसे बनाते हो, बैगिंग बूस्टिंग टेक्निक्स क्या होती है, ठीक है, जहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट, एक्सजी बूस्ट, राइट, रिकमेंडेशन इंजन्स की आप बात करते हो कि रिकमेंडेशन सिस्टम्स कैसे बताते हैं। तो दिस इज द मॉड्यूल जहाँ पे बेसिक्स ऑफ डेटा साइंस एक्चुअली स्टार्ट्स किकिंग इन। ठीक है, तो अगर आप ये वाला मॉड्यूल कर लेते हो, मॉड्यूल 6 कर लेते हो, सो यू आर नाउ एलिजिबल फॉर एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट जॉब्स। तो इसके बाद ऐसा हो जाता है, तो दिस इज वेयर दी फुल स्टैक डेटा साइंस का करिकुलम आल्सो एंड्स। एंड इसके बाद यू कैन इजीली गेट इनिशियल एंट्री लेवल डेटा साइंस जॉब जहाँ पे आपको 7-8 लाख का सैलरी मिल जाएगा, जो कि हमारे स्टूडेंट्स का लगता है। सो अगर आपने ये सब कर लिया, ये 5 स्किल सेट्स एक्वायर कर लिए, तो आपका बेसिकली एलिजिबिलिटी हो जाता है फॉर बोथ डेटा एनालिस्ट एज वेल एज एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट रोल्स। अब इसके बाद अगर आपको करियर में और आगे बढ़ना है, इफ यू वांट टू गो इनटू एडवांस डेटा साइंस रोल्स, आप टॉप प्रोडक्ट कंपनीज में जाना चाहते हो, तो देन इज व्हेन यू कैन एसेंशियली रेफर टू मास्टर्स प्रोग्राम। तो अगर मैं मास्टर्स प्रोग्राम में जाता हूँ, तो यहाँ पे तो फर्स्ट 7 मॉड्यूल्स तो सेम है विच इज ऑफ द फाउंडेशन ट्रैक, लेकिन फिर स्पेशलाइजेशन ट्रैक में यहाँ पे ये सारी चीजें कवर होती हैं, एडवांस्ड मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एमएल ऑप्स। ठीक है, और वो कैसे कवर होती है वो मैं दिखाता हूँ। तो अगर आप मास्टर्स डिग्री में जाते हो स्पेशलाइजेशन ट्रैक में, तो आपको यहाँ पे डीप लर्निंग का मॉड्यूल दिखता है, जहाँ पे आप बेसिकली डीप न्यूरल नेटवर्क्स, कंप्यूटर विजन फंडामेंटल्स, डीप एनएलपी फंडामेंटल्स के बारे सीखते हो। डीप लर्निंग फॉर कंप्यूटर विजन होता है। फिर एमएल ऑप्स, राइट, प्रोडक्शनाइजेशन ऑफ एमएल सिस्टम्स इज व्हाट आई एम कॉलिंग एज एमएल ऑप्स। तो यहाँ पे आप बड़े बड़े मॉडल्स कैसे डिप्लॉय करते हो, हाउ डू यू एक्चुअली
डिप्लॉयड फॉर स्केलेबल यूज केसेस, उन सब चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाता है. सो अगर आपका ड्रीम इज ऑल्सो टू ग्रो बिग and make it like in next 5 years, and not only getting a job but also growing in this field, then what is recommended that आपको advanced concepts भी आने चाहिए. Because companies like Google, Facebook, right, they will not hire candidates basis thus just basic machine learning. They would also expect कि आप लोगों को एडवांस मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एमएल ऑप्स पता हो. तो अगर आपको टीम लीड बनना है, चीफ डेटा साइंटिस्ट बनना है, नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स में ग्रो करते रहना है इस फील्ड में, तो कहीं ना कहीं आपको एडवांस टेक्निकल स्किल सेट्स भी आने चाहिए. तो अगर आप ये सब कुछ कवर कर लेते हो, ऑल दी 5 components over here and 3 advanced components over here, then essentially you are eligible for advanced data scientist roles even at top product companies. ठीक है? Am I clear, guys? Now, is my video stuck? आप लोगों को clearly दिख रहा है? एक बार give me a thumbs up if you guys have like understood this till now. ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. Next important skill set to have, right, if you want to crack data science interviews in 2024 is to also have projects, right? तो आप जो भी चीज कर रहे हो उसको प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करना एंड आपके रेज्यूमे में डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स होना इज मैंडेटरी टुडे. एंड दिस इज समथिंग दैट वी अंडरस्टैंड एट अल्मा बेटर ऑल्सो. तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि हाउ प्रोजेक्ट्स आर अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ अल्मा बेटर, तो सारे मॉड्यूल के बाद, राइट, सो विच एवर मॉड्यूल यू कंप्लीट, फॉर एग्जांपल अगर आप मॉड्यूल 2 कंप्लीट करते हो तो मॉड्यूल 2 के बाद आपको एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट करना पड़ता है. तो आप यहाँ पर से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे एयरबीएनबी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स रहते हैं. तो ये प्रोजेक्ट करते हो, फिर इस प्रोजेक्ट को अल्मा बेटर वेट करती है, मेंटर्स इवैल्यूएट करते हैं, एंड देन दीज प्रोजेक्ट्स आर एडेड इन योर रेज्यूमे. ठीक है? जैसे कि डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, तो आप देखोगे हर एक मॉड्यूल के बाद एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट होता है जो कि आपको करना ही होता है. एंड यहाँ पे आपको देखोगे सैम्पल प्रेजेंटेशन वीडियोस भी होते हैं जो कि, सो दिस इज लाइक वीडियो ऑफ ओल्ड स्टूडेंट्स model that can cluster similar type of content together. बिकॉज आइडिया इज दैट उनको थोड़ा सा सेल्फ ब्रांडिंग करना होता है, वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि उन्होंने प्रोजेक्ट पे काम किया है. तो मैं प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है, डेटा फाइल्स हैं, क्या प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए, फाइनल चेकलिस्ट है, एंड देन यू कैन सबमिट द प्रोजेक्ट एंड आपका प्रोजेक्ट इवैल्यूएट भी होता है. सो आफ्टर एवरी मॉड्यूल अगर आप एक प्रोजेक्ट करते हो तो बाय द एंड ऑफ द कोर्स यू विल एटलीस्ट हैव 6 to 7 projects to write on your resume. So we understand that projects are very important. अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी आप नॉलेज थ्योरेटिकल ले रहे हो, जब तक आपके रेज्यूमे में दैट इज नॉट गोइंग एज अ प्रोजेक्ट, योर रेज्यूमे विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड. इंटरव्यूअर्स विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या चीजें पता है, कैसे प्रोजेक्ट्स पे आपने काम कर रखा है. So this is something that is a part of the learning ecosystem at Alma Better. प्रोजेक्ट्स करना, कराना, उसे प्रेजेंट करना, उसे इवैल्यूएट करवाना. So by the end of the course you will be expert in actually picking up projects and completing it and presenting it. एडिशनल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट्स करके टैब है जहाँ पे आपको एडिशनल प्रोजेक्ट्स भी दिख सकते हैं. तो अगर आपको बियॉन्ड जा करके और एडिशनल प्रोजेक्ट्स करना है तो आप वो भी कर सकते हो. एंड मोस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स आर कमिंग फ्रॉम रियल वर्ल्ड डेटा. तो जो हायरिंग पार्टनर्स होते हैं वो हमसे डेटा शेयर करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स का डेटा शेयर करते हैं, एंड देन पीपल वर्क ऑन दिस. तो सैम्पल प्रेजेंटेशन वीडियो अगर आप देखोगे तो हर जगह रहता है जहाँ पे लोग अपना रेपो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट 750 movies, क्या विजुअलाइजेशन किया है, stand-up comedy. कैसे मॉडल ट्रेन किया है, We know the on and so forth. So this is about projects, guys. So projects is an integral part if you want to crack data science interviews today, right? आप अल्मा बेटर पे तो ऑलरेडी करिकुलम में इंटीग्रेटेड है, बट इसके बियॉन्ड इफ यू गाइस आर प्लानिंग टू एक्सप्लोर अदर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, तो मैं कुछ कुछ ओपन सोर्सेस इंफॉर्मेशन भी बता सकता हूँ. कैगल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो. बहुत सारे ओपन रिपोजिटरीज हैं गिटहब पे जहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं जिनको आप रेप्लिकेट करके कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन देम. बट द ओवरऑल आइडिया इज दैट आपके रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स जाना चाहिए. आप कोई भी कोर्स, कोई भी करिकुलम कर रहे हो, एंश्योर दैट प्रोजेक्ट्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दैट करिकुलम. ठीक है? तो ये हो गई प्रोजेक्ट्स की बात. सॉफ्ट स्किल की बात करें तो अब सॉफ्ट स्किल भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है. आप एनालिटिकल स्किल, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, पर्सनल ब्रांडिंग, ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे. अभी से 5 साल पहले प्रोबेबली अगर सॉफ्ट स्किल्स नहीं भी होती थी डेटा साइंटिस्ट की तो काम चल जाता था.
बट अब ऐसा नहीं होता है, अब आपके एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि अब आप बिजनेस टीम्स के साथ काम कर रहे हो, रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम्स को कंडेंस करके आइडेंटिफाई करके आप उसके अराउंड डेटा साइंस यूज केसेस बिल्ड कर रहे हो, राइट? तो आपका एनालिटिकल और स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग अप्रोच तो होना चाहिए। तभी आजकल इंटरव्यूज में सिर्फ टेक्निकल राउंड्स नहीं होते हैं, वहां पे लोग थोड़े बहुत केस स्टडीज, गेस्टिमेट्स, ये सब चीजें भी पूछते हैं। एंड दैट इज व्हाई ऑल ऑफ दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एल्मा बेटर्स करिकुलम। तो जो एल्मा एक्स है, जो बेसिकली करियर सर्विसेज प्रोग्राम है, विच इज एल्मा एक्स, जिसके बारे में एडमिशन काउंसलर्स आपको बताएंगे अभी कि कैसे चीजें होती हैं। तो वहां पे आप देखोगे तो ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेटेड है। बिजनेस कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने बताया, राइट, कि अगर अब आपका स्ट्रॉन्ग बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं है तो आप कैसे इंटरेक्ट करोगे टॉप लीडरशिप टीम्स के साथ? हाउ विल यू एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन योर वर्क टू सीनियर लीडरशिप, राइट? So nowadays companies are looking for candidates who have technical skills but also have soft skills around these things, राइट? तो टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, ये तीन कोर कॉम्पिटेंसीज हैं गाइस, जो आपको आज के डेट में आनी चाहिए। यू शुड बी हैविंग enough confidence around these three core competencies to be able to make it big in the field of data science. So, clear guys till now? Let me know, give me a thumbs up if I'm audible, if things are clear till now. And meanwhile, I'll also take some questions. Will AI foundational models retard data science? Sumit, no, that is not going to happen. ChatGPT and everything that is coming in will only boost the productivity of data scientists and is not going to impact it. तो वर्क कल्चर इंप्रूव होगा, चीज़ें इंप्रूव होंगी। तो मैं यहाँ पे एनालॉजी लेता हूँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले वर्क कल्चर वाज प्रीटी बैड, पीपल वर वर्किंग 12 आवर्स, 14 आवर्स अ डे, 7 days a week. Industrial revolution came in, people thought that machines will replace humans will not at all be required. But did that happen? No, that did not happen. In fact, quality of life improved for humanity in general. So any technology will only be accepted in the human ecosystem if it is improving the quality of life. तो ऐसा होगा probably going further that productivity of data scientists, software developers will go up. You can see 4 days a week kind of working culture coming in, 6 to 8 hours per day kind of work culture coming in, and some of this has already started happening in European countries. So it will only be improving the quality of life. तो आपका ROI, right, the amount of effort you are putting in and the salary that you are getting out of it will only improve with time. Raju is asking, can we get recording of this session? Raju, the recording will be available on YouTube. So this is something that will be posted on YouTube. You can visit Alma Better's YouTube channel and rewatch this session whenever you want. ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। Right. So how is the interview process looks like in 2024? Now, this is like a very standard process that we have defined. Obviously, company to company चीजें vary कर सकती हैं. Some companies might have slightly different process. But यहाँ पे जो मैं आप लोगों को process explain कर रहा हूँ, that is very well articulated in terms of how recent interviews are happening at Alma Better itself. तो हमारे जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू देते हैं डिफरेंट जगह पे, उसके हिसाब से हमने कोलेट किया है कि एक स्टैंडर्ड प्रोसेस कैसा दिखता है। नाउ ऑन एंड ऑफ थिंग्स माइट हैपन। अब कल आप आके बोल सकते हो मुझे कि यहाँ तो मैंने इंटरव्यू दिया था, ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, मतलब एक दो स्टेप्स इधर उधर आगे पीछे हो सकते हैं, बट ब्रॉडली समरी वाइज दिस इज हाउ द स्टैंडर्ड इंटरव्यू प्रोसेस लुक्स लाइक। और ओवरऑल आइडिया इज दैट अगर आप ऐसे प्रोसेस के अराउंड खुद को प्रिपेयर कर लेते हो तो दैट इज गुड इनफ। दैट इज हाउ थिंग्स विल मूव अहेड। तो जैसे कि सबसे पहला चीज होता है अप्लाई करना। आप या तो सीधा रिक्रूटिंग प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करते हो, या फिर Alma Better टीम्स ऑल्सो, इफ यू आर लाइक एन Alma Better स्टूडेंट, देन Alma Better's placement cell will refer your resume to different places, right? तो वहां से भी आप अप्लाई करवाया जा सकता है आपको, राइट? इनफैक्ट देर इज वन थिंग कॉल्ड जॉब बोर्ड। तो मैं यहाँ पे अगर आपको ये जॉब बोर्ड दिखाऊं, तो जॉब बोर्ड से भी, तो यहाँ पे बेसिकली दिस इज एन ओपन फीचर इन केस, एंड दिस इज नॉट अ पेड फीचर। यहाँ पे आप आकर के अगर यू आर लुकिंग फॉर एनी टेक्निकल जॉब्स, तो दिस हैज एग्रीगेशन ऑफ ऑल दी जॉब्स अक्रॉस ऑल दी प्लेटफॉर्म। तो नौकरी पे, लिंक्डइन पे,
मॉन्स्टर जॉब पे, जितने भी जगह जॉब लिस्टिंग्स आते हैं वो सब जगह से डेटा एक्सट्रैक्ट करके वी कोलेट इट एट वन प्लेस सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर लर्नर्स टू लुक अप फॉर जॉब इन दिस फील्ड। ठीक है, तो दिस इज अ फ्री फीचर नॉट अ पेड फीचर, नो मैटर कहीं भी पढ़ रहे हो आप, यू कैन कम एंड experience things over here and you will get a fair idea of how to look out for job at different places. Coming back to the interview process, तो आप अप्लाई करते हो, उसके बाद पहला राउंड जो जनरली हमने देखा है, राइट, दैट इज एचआर इंटरव्यू राउंड, जहाँ पे दिस इज मोर अबाउट गेटिंग टू नो द कैंडिडेट। द एचआर ट्राइज टू अंडरस्टैंड दैट आपने जो रेज्यूमे में लिख रखा है वो सब फेक तो नहीं है ना, दैट इज ऑल राइट, एंड ट्राइज टू असेस द कैंडिडेट। सो बेसिक क्वेश्चंस अराउंड क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, पास्ट एक्सपीरियंस, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, दिस इज गुड टू गो। नेक्स्ट राउंड जो हमने मोस्टली देखा है दैट इज फोन इंटरव्यू, जहाँ पे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, जहाँ पे थोड़े बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। द फोन स्क्रीन इंटरव्यू जनरली लास्ट फॉर 40 to 45 मिनट्स, और कहीं कहीं पे थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल होता है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम, कोडिंग प्रॉब्लम्स भी पूछ लेते हैं, बट ओवरऑल इट इज़ मोर लाइक अ स्क्रीनिंग राउंड। ठीक है, आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे जो बहुत हैवी होंगे, बेसिक सवाल पूछे जाते हैं जस्ट टू गेट एन आइडिया दैट वेदर you are having like a good understanding of things or not। ठीक है, उसके बाद जो अगला राउंड होता है दैट इज ऑन साइट इंटरव्यूज। ठीक है, नो दिस इज स्टेप 4 एंड दिस इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप एंड द डिसीजन मेकर। तो यहाँ पे 3 से 4 इंटरव्यूज हो सकते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे इंटरव्यू होती है। टेक्निकल राउंड्स होते हैं जहाँ पे आपको कोर टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, योर रेज्यूमे के अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपने जो प्रोजेक्ट्स लिख रखे हैं रेज्यूमे उन पे डिस्कशन होता है। देन प्रॉपर कोडिंग राउंड्स होते हैं जहाँ पे आप बेसिकली they will ask you to code on a given problem that they will provide, right? There are case studies, there are behavioral questions, so effectively 4 to 5 राउंड्स में यहाँ पे आपको टोटल समराइज किया जाता है कि हाउ गुड अ कैंडिडेट यू आर, एंड दिस इज द मेक और ब्रेक राउंड। ओके, so mostly I think post COVID we have seen that these rounds are happening on site. So for example, अगर आपका फोन इंटरव्यू राउंड तक सही हो गया है तो आप ऑन साइट इंटरव्यूज में आते हो, एंड एक ही दिन में मोस्टली हो जाता है, बट स्टिल देयर आर कंपनीज दैट आर डूइंग इट ऑफलाइन, व्हिच मींस ऑनलाइन कर रहे हैं, मतलब दे आर नॉट कॉलिंग यू ऑफलाइन, दे आर डूइंग इट ऑनलाइन, एंड then that process can take a week or two। तो यहाँ पे जो 4-5 राउंड है that can be segregated over a week or two। Otherwise, if they are calling you on site, it can happen in a day also। So if this is done, if this round is done, then the last round is mostly offer letter negotiation। So यहाँ पे generally this is more like a formal round जहाँ पे आप अपनी salary के around negotiate करते हो, what are the right kind of salaries you will get, and what happens with Alma Better students is that because Alma Better's placement team is also involved in all these discussions, so a lot of offer letter negotiation is done by Alma Better's placement cell also, in order to boost or maximize the salary opportunity for its candidates, right? Because हमारा भी वो placement guarantee होता है, right, that your pay after placement fee is only payable if you get a certain amount, right? And it is incentive on us also that the maximum, the higher the salary the candidate gets, the better the ROI the institution also gets. So that is interlocked in that way. Hence, if you have like done with all of these things, offer letter negotiation में Alma Better's placement team also helps you out with that, right? Because रिक्रूटर्स के साथ कनेक्टेड हैं, जो एचआर आपसे नेगोशिएट कर रहे हैं, उन्होंने 10 ऑलरेडी कैंडिडेट्स हायर कर रखे हैं हमारे से, सो एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हेल्प्स इन द ब्रॉडर पिक्चर ऑल्सो, right? So this was it, guys. This was the how the sample how the interview process will look like। सैम्पल इंटरव्यू क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो ऐसा कोई फिक्स टेम्पलेट नहीं है कि मेरे पास ये 100 क्वेश्चंस है और इसी में से चीजें पूछी जाएंगी। मोस्टली डिस्कशंस आपके प्रोजेक्ट से स्टार्ट होंगे। जो प्रोजेक्ट्स आपने रिज्यूमे में लिख रखा है उसमें जो आपने टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स यूज कर रखे हैं उन पे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उनके डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट्स पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। द that is how 99% of interviews look like। In 1 or 2 cases they might ask you something that is also beyond your resume, but that happens rarely। but overall idea is that कि अगर आप मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 7 अगर रिलीजियसली कंप्लीट कर ले रहे हो एल्मा बेटर में, then you will be able to handle all these questions in a proper manner। केस स्टडी क्वेश्चंस की बात करें
तो काफ़ी सारे केस स्टडी क्वेश्चंस भी आजकल इंपॉर्टेंट हो गए, जैसा कि मैंने बताया कि अब डेटा साइंस टीम इज़ लाइक अ डायरेक्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर टीम एंड नो मोर टीम वर्किंग इन साइलोस। तो इवैल्यूएट किया जाता है कि आपका बिजनेस सेंस कितना स्ट्रांग है, आपका एनालिटिकल स्किल्स कितना अच्छा है, आपका स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग अप्रोच हाउ गुड इट इज. So you are evaluated on those terms also, and hence you might expect that some of the companies will also have case study rounds with you, जहाँ पे product case studies हो सकते हैं, data analytics case study questions हो सकते हैं, modeling and machine learning case studies हो सकते हैं, business case studies हो सकते हैं. So the idea is that they will try to gauge your structured thinking abilities, and they will give you some business use cases, and then try that they will expect that you convert it into data science use case and ट्रांसलेट इट इनटू अ मॉडल बेस्ड अप्रोच कि आप कैसे इस बिजनेस प्रॉब्लम को डेटा साइंस यूज केस के थ्रू सॉल्व करोगे. सो ये सब चीजें बहुत एक्सपेक्टेड है, बहुत नॉर्मल हो चुकी हैं इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज. वी आर सीइंग दैट कंपनीज आर जनरली हैविंग केस स्टडी राउंड्स आल्सो, एंड हेंस एल्मा बेटर में भी जब आपको प्रिपेयर कराया जाता है तो केस स्टडी क्वेश्चंस, केस स्टडी सेशंस के अराउंड भी प्रिपेयर कराया जाता है, बिकॉज नाउअडेज इट इज इम्पोर्टेंट. सो 2024 के हिसाब से this is what you guys need to be prepared for. So that's it, guys, mostly from my end. I hope that this session was helpful in terms of getting a fair idea of how the data science industry is growing, क्या use cases हैं, क्या government predictions हैं, Indian government, US government, क्या क्या technical skills चाहिए होते हैं, interview process कैसा होता है. So the whole idea was to give you guys a fair perspective, a neutral perspective and biased perspective around the data science career itself in general. So if you guys are essentially looking to make a career in data science, and that is something that you aspire for, so you can leverage today's session, today's understanding. आप ये session rewatch कर सकते हो to get a fair idea. तो links मैंने share करे हैं around the articles about how the industry itself will grow. So उन सब चीज़ों के around आप discuss कर सकते हो, and feel free to reach out to me on my LinkedIn also. So I essentially connect with students over LinkedIn also. सो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, नो मैटर यू आर एनरोलिंग एट अल्मा बेटर और नॉट, दैट एसेंशियली इज नथिंग, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप फिर भी मुझे रीच आउट कर सकते हो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस ऑन दैट फ्रंट आल्सो. Rajendra is asking, show last slide before thank you. So that was nothing, Rajendra. That was just a slide wherein I wanted to give a perspective to people कि फैंग के बियॉन्ड भी क्या कंपनीज है जो ग्रो कर रही हैं, which are like performing better than FANG in some manner, right? So a lot of hue and cry about FANG happens, but companies like Microsoft, Nvidia, Airbnb, Uber, Tesla, Adobe, so these are the companies that are essentially performing better, right, in terms of data science use cases as compared to FANG. So let's not limit only to FANG, but also have a perspective around how things are happening. ठीक है. So this is it broadly, guys. Any questions? Feel free to. Cool. So I think mostly done from my end. Now we will have admission counselors, some senior admission counselors joining in to give you guys a brief idea around how studying at Alma Better will look like. What are the things you can expect? Course structure कैसा होगा, fee कैसा होगा, and things around that. So Saket is here. Welcome, Saket. I think you can take it from here, and then like answer all the queries for all the students. So thank you, guys. I hope this was a useful session for you, and this might help you in making the right decision in future. Okay, thank you very much, sir. I hope, guys, each and everything is clear. So, going ahead, we'll be taking you through how Alma Beta looks like, and probably I'll be answering all your questions as well. After this session, Krishna has already posted a link over here which you can fill and you can connect with us on one-to-one basis for a proper counseling. I'm working over here at Alma Beta since last 10 to 11 months, and I have counseled more than 3,000 students coming out from a various backgrounds from 0 to 3 years till 22 to 23 years of experience, and they are having an expectations from this particular domain because everybody is running behind the same. So going ahead, we'll be talking more and more about how Alma Beta usually helps you out. So I'm sharing my screen first of all. Am I audible and visible to all of you guys? Can I get a quick thumbs up or yes or no? Okay, great, great.
So let me share my screen first, and probably I'll be answering all your questions related to Alma Better, why Alma Better, and everything related to that. Just allow me a moment. I hope this is visible to you. Okay, great, great. Before going ahead, first of all, I'd like to know from your end, how was the session? Was that informative, like related to data science domain we talked about, like whatever sir has explained you in last 1 hour, was that informative, or like you are having any sort of queries around data science as of now? If any questions are there, like we'll be addressing those questions during this session as well. Before proceeding ahead, just I'm looking forward from your questions, guys. Be a bit more interactive so that this session will be ending up with some fruitful outcomes as well. Okay. So let me proceed. Going ahead, we'll be talking more about like how Alma Beta functions. Alma Beta, about Alma Beta, if you will, if I will tell you, like Alma Beta is an autonomous university, comes under European standards. Specifically, Alma Beta is affiliated to Wolf University and IIT Guwahati as well. It means whenever you pursue any program at Alma Beta, like you will be getting your certifications done from IIT Guwahati. Parallel to that, like you can also opt Alma Mater for your higher education in terms of your master's degree, so that you can attain a global accreditation degree from Wolf University, which is based out of London, UK. Okay. So going ahead, you will see about Alma Mater, like this is a cohort based system. Probably you'll be having your peers in the group, you'll be having certain number of candidates in the in a batch. Probably the next batch is about to start on 27th of this particular month for both masters and for certification as well. So you can do projects in team, and like you can together get ready for the jobs, because see, anybody can come with a very different background. Like so many people are have joined this particular session from different places across India. So like you'll be having those kinds of circle all around you whenever you join Alma Mater, because this is going to be a cohort based or community first learning platform, which is already visible in front of your screen. So probably I'll be going forward with all these things to showcase you the steps. And why Alma Beta? This is the biggest question like people used to ask. So first and the foremost thing is, this is one of the most relevant and most updated curriculum present in the market. As I already mentioned, it is affiliated to European standards and IIT Guwahati. And I I should say, like in Indian market, if you will see IITs, top 7 IITs are those which are directing educations into technical education. Specifically, they are the most updated and the relevant curriculum. So Alma Beta is affiliated to that, and probably you'll be finding your all the classes in an interactive manner, just like we have interacted over here. So probably you'll be getting all those interactions over there in the live classes as well. You'll be getting multiple number of projects, 20 plus capstone projects are there. In the case of masters, even you'll be getting end-to-end project, capstone project. Like you are going to get more than 20, and at the same point of time you can choose like on which project you want to get your expertise done. These all projects are going to be surrounded around, you can say, the industry relevancy. Like you are going to prepare yourself for industry ready. It is not like that traditional way of teaching or something like that. You are simply going through the conceptual learnings. No, you'll be going through each and everything which is relevant to industry. जो industry में आज के डेट में चल रहा है, probably you'll be doing all those things over here. Capstone means it is going to be a module based project. The biggest fact about capstone project is, suppose if you're going through capstone, it will give you a deeper insights about how project functions. एक छोटे से छोटे मॉड्यूल, सपोज इफ यू आर स्टडिंग अबाउट मशीन लर्निंग, सो मशीन लर्निंग में रिग्रेशन कैसे वर्क करता है, यू विल बी एबल टू नो. So we have taken care of each and everything over here, so that once you are graduating from Alma Better, probably you are industry, you should be industry ready. It's not about a single job, it's about your career building. Usme capstone project plays a very important role. Daily doubt resolution is again a very important point, because so many
of you might be coming out from a very different backgrounds. Like बहुत सारे ऐसे questions आते हैं, like people are coming out with BCom background, BSc background, BA background, and they used to ask these questions like how will I be able to manage all the things. See, it depends upon your intent. आप कितना करना चाह रहे हैं. At the same point of time, whatever we are going to deliver, it is going to be delivered from the very scratch and from the very basic. The major agenda behind this daily doubt resolution sessions along with one to one mentorship session, इसका motive बस ये, it is again unlimited over here, so that despite of the background, if you're trying to learn something, probably you should get proper support. So there is nothing as such like you can go for twice in a day or thrice in a day. No, you can go as many times as you can. If you want to know about anything, if you are having doubt, if you are doing, if you are hustling, probably team will be there to help you out. That is where daily doubt resolution comes into the picture. Apart from classes, it is apart from classes will be there. After classes, suppose if you're struggling anywhere in between 11 to 8, you can get into doubt resolution session. Then 50 plus mock interviews. See, mock interviews are something, यहाँ पर alma beta पे we are going to take each and every opportunity very seriously, because we are a placement guarantee platform which has already been mentioned by your chancellor, right? So what usually happens, it's not about since we are offering you placement guarantee यहाँ पे mock interviews इतने ज्यादा दिए गए, no. It's about suppose if you're missing out on any particular opportunity, you are again undergoing cooling period for that particular organization. उससे होता क्या है, like for a certain duration of time you'll not be able to apply if you have been rejected from the organization. So what we do, suppose in this particular domain, if you're looking forward for getting into any particular set of organization, so we used to make you prepare. सब पहले तो आपकी technical training हो जाती है. Then we used to conduct a test which is known as AB CAT. वे अभी हम जानेंगे उसके बारे में. So once you are clearing AB CAT, probably again आपका 8 weeks का training होगा. So उस 8 weeks के ट्रेनिंग में प्रोबेबली वी आर गोइंग टू कंडक्ट सम मॉक इंटरव्यूज. आपके रेज्यूमे बिल्डिंग कैसे होंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग, सो दैट यू कैन कैच सम इंटरव्यूज बाय योरसेल्फ एज वेल. उसके बाद वहाँ पे different sets of organizations में, like here we are talking about product based companies. So suppose if you're getting into product based companies, in that particular context, what are those rounds of interviews can comes into the picture. But अगर आप service based पे जा रहे हो, things will get changed. So here in this particular case, you'll be getting each and every informations regarding that. And suppose if there is an interview on Monday, so probably you'll be having your mock interview today रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट कि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जाओ और वहां पे परफॉर्म करो. उससे पहले आपको फीडबैक प्रॉपरली मिलता है. सो इन दिस वे, डे एंड नाइट द अल्मा बेटर टीम इज वर्किंग एंड डेफिनेटली वी आर गेटिंग रिजल्ट्स एज वेल. लास्टली आप देखोगे 100% जॉब गारंटी. दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ओवर हियर कि जॉब गारंटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है. People used to come to me because since I'm directly connected with all the students out here, आप लोगों में से भी हो सकते हैं बहुत लोग लाइक वन टू वन बेसिस पे मेरे से पहले बात की होंगी या करोगे. सो दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, ये जॉब गारंटी कैसे है. सी हियर एट अल्मा बेटा वी इंश्योर्स यू. इट इज नॉट समथिंग लाइक इफ यू आर कमिंग अप ओवर हियर, आप मेहनत कर रहे हो, आप अपने तरफ से 100% दे रहे हो, तो इट सिंपली मीन्स वी आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू लीव यू अप एनी डे. Probably we will be with you till the time you are getting the placements done. एंड अल्टीमेटली यहाँ पे आईएसए मॉडल्स होते हैं. आईएसए मींस इनकम शेयर मॉडल एंड ऑल. सो अल्मा बेटर का भी रेवेन्यू जनरेशन वहां से इन्वॉल्व होता है. तो अल्टीमेटली जॉब गारंटी आपको प्रॉपरली like provide किया जाता है, so that in a initial stage you will not be required to pay too much amount of money. Even if you're coming under placement guarantee, probably there will be a refundable amount which we are going to pitch to you in upcoming slides. Before moving next slide, let me check chat once because few questions are there. Mohammad Rihan Khan, what about AI, sir? AI is going to end all the coding jobs. There are a lot of AIs are coming. Rehan, it is not like that. As Arshan sir has already mentioned in previous 1 hour session, like this is for like AI अगर आ रहा है, if AI is coming into the play, this is for like ईज करने के लिए, आसान करने के लिए आपकी जर्नी को, या फिर किसी भी चीज को ना थोड़ा सा और रिलायबल बनाने के लिए. इट इज नॉट लाइक दैट इट विल बी रिमूविंग अप द जॉब्स. देर आर सर्टेन थिंग्स विच इज रोलिंग आउट इन द मार्केट की चैट जीपीटी आ गया तो जॉब्स नहीं रहेंगे एंड द जॉब्स चले जाएंगे. बट इफ यू विल सी इनटू द डेटा, इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज नॉट द रियलिटी. एआई अपने आप में एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के लिए होता है.
Okay. यादव आशुतोष is asking, sir कोडिंग भी चाहिए, बेसिक्स ऑफ कोडिंग आपको चाहिए आशुतोष, लाइक डेफिनेटली अगर आपको अभी कोडिंग आती नहीं तो यू विल बी लर्निंग अबाउट, बट मेजोरिटी आप एज अ कोडर कहीं नहीं जाएंगे, यू विल बी डिपेंडेंट अपॉन लाइब्रेरीज सो मेनी टाइम्स, फंक्शंस वहां पे ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, बट सी when you are getting into any zone in IT, in data science or in development, एक basic understanding coding का होना चाहिए. That is where Python or R comes into the picture over here. Why we are using Python? Because of its use library, numpys and pandas के format में. ठीक है, so दोस्तों coding तो चाहिए, and probably we are going to make you learn about all those things over here. I hope this has answered your question, Asutosh. So let's move to another slide. For learning activities, this is again a very very important thing to understand. For technical skills, if you will see what we do and how exactly we provide all these things to you. For technical skills, it is very very important कि सबसे पहली चीज है कि आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए. कैसे स्ट्रक्चर होते हैं अभी सर ने शो करा, डेफिनेटली आई विल बी शोइंग दैट टू यू एज वेल. आपके पास एक प्रॉपर, जैसे सपोज यहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी होंगे लाइक जिनका कुछ ना कुछ गोल होगा, टारगेट होगा, लाइक they want to reach that particular position and profile. So in that particular case, you should be having a proper roadmap towards it. And this is the roadmap. Like for technical skills, this is for technical skills, what we are going to do. Live lectures you are going to get. It is not going to be a pre-recorded kind of thing only. No, definitely you are going to have your classes 3 days in a week in a live lectures format. उसके बाद लैब एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि इन द फॉर्मेट ऑफ टास्क एंड असाइनमेंट्स आपको बहुत सारी चीजें विथ ईच एंड एवरी क्लास आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलते हैं. बिकॉज सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर कोई भी टॉपिक को आपको पढ़ना है, उसको जब तक कंप्यूटर साइंस में, डेटा साइंस में, किसी भी डोमेन में कंसेप्चुअली जानना एक अलग अलग चीज होता है, इम्प्लीमेंट करना एक अलग चीज होता है. एज आई मेंशन, कैपस्टोन हमने यहाँ पे क्यों रखा है? कैपस्टोन इज समथिंग विच विल बी गिविंग यू अ डीपर इनसाइट्स अबाउट द थिंग्स. सो व्हाट वी आर डूइंग अप ओवर हियर कि पहले आप एक एक सिंगल टॉपिक को भी कवर कर रहे हो तो उसकी यूटिलिटी समझो, कहाँ पे वो यूज होगा. इट्स नॉट अबाउट कि एक कोड मैंने दिया, सम ऑफ टू नंबर्स लाइक पैलिंड्रोम है, फिबोनाची सीरीज है, आपने कोड कर लिया, ऑल डन. नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूटिलिटी, एंड दैट इज वेयर लैब एक्सपेरिमेंट्स कम्स इनटू द पिक्चर. आपके पास हर क्लास के बाद लैब एक्सपेरिमेंट्स यानी कि टास्क एंड असाइनमेंट्स दिए गए होंगे. ओके. And then moving ahead, Rihan is asking, for Almax, you have to be good coder in Python because they ask very hard questions. It depends, Rihan. Like ऐसा होता है Almax में, जो भी आपका 6 months का जर्नी है, if you have done your practice in a very good manner, probably you are going in the right direction. Alma X का मोटिव ये नहीं होता है कि आपको वहां पे फेल किया जाए. Almax का मोटिव ये नहीं होता है कि like we are going to judge you. Almax to make you prepare for the market. आप अल्मा बेटर पे फाइट करने नहीं आ रहे हो, आप मार्केट में फाइट करने जा रहे हो. टू मेक योर स्पेस, आपको वहां पे थोड़ी सी अपनी प्रोफिशिएंसी बढ़ानी होती है, सो दैट यू कैन नॉट लूज आउट ऑन एनी अपॉर्चुनिटी. एज आई ऑलरेडी मेंशनड कि आप जब इंडस्ट्री रेडी होते हो, जैसा आपने क्वेश्चंस अभी करा था, आपको कोई भी ना जॉब खरीद करके नहीं देता है. यू आर मेकिंग योर ओन स्पेस, राइट? if you want to reach out to those spaces, probably you have to fight for it, you have to learn the skills. And अगर आपने genuinely 6 months में genuinely मेहनत करे हैं, चीजों को सीखा है, so definitely it is not going to be a toughest task for you. In case of Almax has expired, then how I placed? Saifullah, nice question. Saifullah, see, suppose if you're joining Alma Beta today, let's take an example. Today is 23rd of March, so it is 6 to 7 months program when the live classes will be going on for you. So if 23rd of March, if you have joined any particular cohort, so till next 23rd of March 2025, you'll be having your eligibility. अगर आपने उस बीच में नहीं करा, then definitely you are not eligible, because we want consistency. It is not, you should not be very lethargic. आपके पास अगर medical issues हैं, कोई generic concern है, in that particular case it will get considered. But suppose if you are not so consistent, if you are very casual with the approach what exactly you are going ahead with, in that particular case nobody can help. So Almax अगर expire हो चुका है, then definitely like you need to connect with support team in that particular case. लेकिन आपको अगर 6 महीने का कोर्स है, 7 महीने का कोर्स है, so we are additionally providing you additional 6 months to complete up the things as per your own pace. If you are completing up the things, probably you will be getting into Almax. आप Almax में अगर 1 साल के बाद जा रहे हो, that is not at all a problem. आपको AB CAT क्लियर करना है within a year of time. Okay.
Now, like third thing is project and assignment, which I've already explained. Like with each and every module, आपके पास जो मेजर जहाँ पे भी टेक्निकलिटीज की जरूरत होगी, यू विल बी हैविंग अ प्रोजेक्ट लाइक इन सर्टिफिकेशन. इफ यू विल सी फाउंडेशन की जब हम बात करते हैं, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट यू विल बी गेटिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर फाउंडेशन इटसेल्फ, लाइक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर पाइथन मॉड्यूल इटसेल्फ, जिसको हम ईडीए प्रोजेक्ट बोलते हैं, exploratory data analytics project. After that completion of like relational database, आपको data visualization पर एक project करना होता है. Then you will be entering into machine learning. Machine learning में regression, classification and unsupervised पर एक एक capstone आपको करना पड़ता है. So फाउंडेशन में ही 4 से 5 प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, आपको वो करना मैंडेट होता है. रीजन ये होता है, रीजन बीइंग, सपोज इफ यू आर गोइंग विथ ऑल दिस technicalities and if you are understanding about how these functions in a practical way, probably things will be helping you out. Let me take question from my cohort. The person who wants on second place and on the fourth place of our leaderboard failed because of the level of Python coding problem of ABCAT. Okay. Rehan, it's not about second place or fourth place. It is just a matter of competitiveness over there. If somebody is failing on Python, anybody can fail and anybody can qualify. It is just a matter how exactly you are approaching towards a problem statement. So don't compare. It is not a school study, buddy. ये स्कूल की पढ़ाई नहीं हो रही कि रैंक वन आ रहा है तो उसका तो बहुत अच्छा होना चाहिए, हो जाना चाहिए, उसका क्लियर हो जाना चाहिए. डोंट थिंक. आपका जो वे ऑफ थिंकिंग हो सकता है, दैट कैन बी अ डिफरेंट थिंग. आपको समझना पड़ेगा कि हियर यू आर डूइंग द थिंग्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. आपको कोई कंपनी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेने की वजह से जॉब नहीं देती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड यू हैव टू मेक योरसेल्फ प्रिपेयर फॉर द थिंग्स कि आप वहां पे जब भी जा रहे हो, आप समझ रहे हो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को. Then group discussion is something where you will be knowing more about, like you will be connecting with all the peers out there and आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हो रिलेटेड टू द थिंग्स कि उनका कहाँ कहाँ पे डाउट आ रहा है. जैसे रेहान ने अभी बोला, लाइक देयर आर पीपल. सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर ट्राइंग इनफ, आप कहीं पे लैग कर रहे हो, वहां पे यू कैन बी हेल्प, आपको हेल्प किया जाएगा. जैसे लाइक कृष्णा ने भी रिप्लाई करा कि एबी कैट के लिए आपके पास अटेम्प्ट्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने एबी कैट एक बार क्लियर नहीं करा तो फिर आपको अटेम्प्ट्स नहीं मिलेंगे. डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट, like with another 3 to 4 5 attempts as well. It is not at all a problem. बट द थिंग इज कि वी डू नॉट वांट कि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी लूज करो. आप अपॉर्चुनिटी लूज करोगे, वो हमारे लिए नहीं, आपके लिए लॉस होता है, बिकॉज आप कूलिंग पीरियड में चले जाओगे. सपोज इफ इट इज अमेजॉन, अगर 24 LPA का पैकेज लेकर के आ रही है, सो कोई इसको लूज नहीं करना चाहता है ना. एवरीबडी वांट टू गिव देयर 100%. इन दैट पर्टिकुलर केस, आप अगर मान लो अमेजॉन पे लूज आउट करो, तो फिर नेक्स्ट 6 महीने आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप 6 महीने इंतजार तो करना पड़ेगा ना. So be very practical with the opportunities being created in the market. Okay. For motivation and industry exposure, this is an important factor. बहुत बार क्या होता है कि कोर्स के बिगनिंग में आप ज्वाइन करते हो, बट टफनेस के कारण या बहुत सारे चैलेंजेस वहां पे आते हैं आपको. इट इज नॉट लाइक दैट कि बहुत इजी होता है, सारी चीजें बहुत इजीली क्रैक हो जाती है. इसको इजी बनाया जाता है विद द प्रोसेस. Okay, so in that particular case, one-to-one mentorship is going to be provided to you. Like you can take one-to-one mentorship. One-to-one mentorship is like your बड़े भैया and बड़ी दीदी. अगर आपने कभी challenge face करा, even in case रिहान, अगर आप भी challenge face करते हो ना, to try getting back in touch with mentorship session once, and let me know. Be connected with me. I'll be sharing you the details over here in the chat. Connect with me once, and I will try to understand your problem on a personal level as well. लेकिन वन टू वन मेंटोरशिप सेशंस में भी जाओ. मेजरली क्या चैलेंज आता है, आपको नहीं आता है, दे विल बी हेल्पिंग यू आउट. यहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स जो दिए जाते हैं, लाइक आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर्स होते हैं, दे विल मेक यू अवेयर अबाउट लाइक हाउ the things are working over here, like how किस तरीके से market में transition हो रहा है. Then community participation, everybody is a part of a alma better communicative community, whoever is a student at alma better, so that they should know like where all students are getting placed, कहाँ पे उनका placements हो रहा है, कहाँ किस background से आ रहा है. Even you can connect like alma better over LinkedIn to get these informations out. You can connect with all those folks जिनका placement हो रहा है, उनके साथ आप one to one बात करो. They are also helping. Mentorship
गॉसिप सेशंस में भी आपको बहुत सारे वैसे लोग, वैसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो अल्मा बेटर के रहे हैं कभी, एंड दे हैव रीच टू अ माइलस्टोन एंड दे आर वर्किंग इन अ वेरी गुड प्लेस, और अभी कहीं ना कहीं वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, कमिंग आउट विद अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड. सो फॉर मोटिवेशन एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर, दीज आर यूजिंग मैंडेटरी फॉर अल्मा. ये जरूरी होता है. आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, क्लासेस जो भी कर रहे हो, अटेंडेंस क्राइटेरिया से ज्यादा कैपस्टोन प्रोजेक्ट एंड कंपेटेंसी चैलेंजेस आर इंपॉर्टेंट. कंपेटेंसी चैलेंज में यू हैव टू स्कोर 75% एंड अबव. एंड कैपस्टोन प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको 5 प्रोजेक्ट्स बताए ना, इंक्लूडिंग ईडीए, देन डेटा विजुअलाइजेशन, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन एंड सुपरवाइज, इस पे आपको 5 प्रोजेक्ट्स जो भी है ये कैप्स्टोन प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना होता है. ओके, let me go with Rihan questions once again. So I'm getting at least 10 hours in a day, but still I have still one module remaining and 2 projects and 2 mid assessments. I have only 2 months. I want some more time for prepare for AB CAT. Rihan, connect with me once. Like this is not the right place to talk all the things about this over here, because majority of the folks are not a part of Alma Beta over here. So this is something where I need to discuss on one-to-one basis what challenges you're facing. No issues. If you're not understanding the concepts, let me help you out. So connect with me once after this particular chat. I'll be dropping my number over here. You can text me on WhatsApp, and probably we'll be connecting on one-to-one basis. Okay. Okay, till now, any other query, guys? If you are having any queries, then please go ahead. Or like you are understanding everything, then gives me a thumbs up once. Guys, can I get a quick thumbs up once? Like, are you able to understand whatever I'm saying? Okay, great. So these are learning activities. The most important part, we have more than 700 companies hiring from us. What does it mean? 700 कंपनीज प्लस हायरिंग का मतलब ये होता है, लाइक इफ यू आर ज्वाइनिंग अल्मा बेटर, लाइक उनके पास बहुत सारे वैसे ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, लाइक प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे जिस भी स्टूडेंट्स को उन्होंने हायर करा है, एंड इफ दे आर डूइंग वेल इन दोस ऑर्गेनाइजेशंस, इन दैट पर्टिकुलर केस क्रेडिबिलिटीज क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होती है. जैसा कि सर ने आपको बताया था कि समटाइम्स नेगोशिएशंस में वी आर डायरेक्टली इन्वॉल्व फॉर द स्टूडेंट सो दैट यू कैन गेट सम हायर पैकेजेस एंड ऑल, because there is ISA and all. So, like right now, you are having 700 plus companies onboarded at Alma Biter. It means if any single candidate is coming in a year of span, suppose अगर 350 companies भी hire कर रही है, I'm just taking a rough figure. अगर 350 companies भी hire कर रही है, तो in that particular case, any particular candidate is having multiple and multiple number of opportunities. So definitely it goes on and around across the year. It is not like that कि एक particular season होता है. About the fact कि यहाँ पर जो hiring होती है 365 days चल रही होती है. So definitely this is a plus point, and that is where people wants to join Alma Bitter, and people start thinking about Alma Bitter, because we are having a very healthy pool of companies which are coming over here to hire the candidates. Okay. Going ahead, like these are the like companies: Amazon, Uber, Novartis is again hires a lot many candidates from Alma Better. You can find in their LinkedIn page as well, like Mintra. In a tech industry means you will be seeing over here, like आपको बहुत सारे categories मिलेंगे. Even if you will talk about product based companies, like tier 1 की अब बात करोगे, Uber है, Amazon है. So if you will talk about tier 2 product based companies, service based companies like Accenture है, high tech startups है, या फिर hybrid organizations है. So these are the pool where our students are getting placed, or like इसमें से यहाँ पे इन जगह पे स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो रहे हैं. सो इससे दो चीजें पता चलती हैं. एक तो कि जितने भी टॉप एंड ऑर्गेनाइजेशंस है, जाइंट्स हैं, या फिर जितने भी हाईटेक स्टार्टअप्स है, या फिर कहीं पे भी आप देखोगे, एवरीवेयर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा साइंस पीपल. So that is why this is a very this is the right time to start here and excel into this particular field, because now so many students are there, like coming out from a different background, so many working professionals, like they are serving any particular organization in different backgrounds. They are looking for making a change. Slowly and gradually, after certain duration, what will happen? The competition will get increased. So that is why
like this is actually the right time to start if you are feeling about it to start. So these are the set of companies. The salary distribution, it is again an interesting fact, like maybe आप सभी लोगों के लिए बहुत interesting होगा. Suppose if somebody is joining alma better, okay, in that particular case जो सैलरी रेंज होते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल जिनको सैलरी जो मिलती है इन द केस ऑफ सर्टिफिकेशन, इफ यू विल टॉक अबाउट, so like 5 to 7 lp 19% candidates are there, 7 to 8 like 29%, 8 to 9 lp is 37%, 9 to 10 lp is 12%, and above than 10 lp is 3%. So if you will see, like since masters has started recently, like in the month of May 2023, now greater than 10 lpa package is also increasing at alma better, because majority of the product based organization, वो product based organization के लिए जो लोग prepare ज़्यादा है focused है, definitely they are going to get greater than 10 lpa. Sometimes experiences are also required. So जो data आपके सामने collectively दिख रहा है, that is something जहाँ पे किसी दूसरे डोमेन से लोग आकर के ट्रांजिट कर रहे हैं, या फिर एज अ फ्रेशर अपना जर्नी शुरू कर रहे हैं. So majority in Indian market, if you will see, the average package usually lands in between 8 to 9 lpa. Okay, so this data is a collectively like gathered from like हमारा previous लगभग 1 साल का एक्सपीरियंस, 1.5 साल का एक्सपीरियंस जो रहा है. Okay, so ये instructors again, instructors are very very important. जहाँ पे भी आप जाते हो, you know, you should know like who all people are there who is going to instruct you, like Rachit Jain working at BCG, Ravi Ranjan is there who is working as a data scientist in Publicis Sapient, Sayan Dey is there Walmart में, again a product based organization, Sankalp Jain is there, Krishnendu Mandal is there. So these are those people who is having a decent amount of experience. They've already done so many things into their career. Now they are teaching you guys, they are training you guys so that you can know the practicalities. Why they are here? Just to let you know about the real world problem statement, because if you will be able to solve the real world problem, probably you are in the right direction. If you are not in that particular zone, probably you'll be struggling. So practicals बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. That is where these instructors and mentors comes into the picture. Okay, success stories, like you can find these stories in a multiple places, like even in LinkedIn, and even the fact about alma better is आप इनको connect करो through LinkedIn. You can connect these folks, और like जो भी alma better post करती है कि like this student has got their placements done, उनके साथ बात कर सकते हो आप, connect करो. If you'll be able to, if you are unable to meet any person out there, probably you can tell us, we can like help you in alumni session, so that आपको ना एक रोड मैप, अभी तो आप पढ़ाई करोगे लेकिन आपको एक रोड मैप मिलेगा कि क्या उनके पास चैलेंजेस आए थे, क्या गलती करी थी उन्होंने, थर्ड अटेम्प्ट में कंपनी क्रैक करा, फिफ्थ में करा, टेंथ में करा. सो व्हाट आर दोस थिंग्स जो आप स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते हो, सो दैट यू विल नॉट बी मिसिंग आउट ऑन एनी अपॉर्चुनिटी. दैट इज द सक्सेस स्टोरीज है. स्टूडेंट डैशबोर्ड वॉक थ्रू, ये आई थिंक लाइक अर्शन सर ने ऑलरेडी कराया, बट डेफिनेटली let me take you through dashboard once again, so that it will be giving you a bit more idea about the same. Just allow me a moment, let me share it once again. रिहान, आई गेस आप तो यूज कर रहे हो, आपको तो पता होगा डैशबोर्ड के बारे में. Let me take few questions first. Sumit Samaj does 6 year non IT works experience gap consider later comer. Sumit, gap is always a painful thing, but if you are willing to start your career from very fresh stage, okay, and if you are having willingness to learn, then definitely we can make, like we are having multiple candidates, like I personally know few candidates, like Chandani is there. Like there was a 6 year of gap, she was coming out from a BCom background, like she got placed recently 2 weeks back, like in math logic at 11 lpa she got her placements done. So she was a fresher only. Aditya Sham Sundar is there, like
He was again one of our master's candidate. वो masters में enrolled as even Chandni was there in masters. So they're studying like after foundation itself, like they have got their placements and they are studying as well and they are doing their job as well. So Aditya का भी like icon में हुआ as a Power BI consultant at 7.5 LPA. Like there was again a gap of certain duration in his profile. He was coming out from a B arc background, again non CSE background. So see, it depends upon your like what exactly you're trying to do. We'll be connecting on one-to-one basis to understand more about you, because 6 years of non-IT experience or like gap is there. It is not going to be a very big challenge. Probably you can transit your career into this domain. Okay. So this is a quick overview of basically your dashboard, how it looks like. Suppose the first section is your my goal section. Suppose if you're willing to know more about certification, probably you can choose. Or suppose if you want to know about masters, probably you can click on explore course and you can simply click on masters to know more about masters. Okay. First of all, we'll be going through your certification. Okay. So that there should not be any confusion comes into the picture. Okay. See the website, the screen which is in front of you, it is very clear. The left hand side is your navigation bar. आप अभी भी उसको explore कर सकते हो. I am sharing the link once again in the chat so that you guys can also log in at the same point of time in case if it is required, or else आप बाद में भी log in कर सकते हो after knowing the things over here. Okay. सो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इट इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग. होम पे आप जाओगे तो होम पर आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोग्राम मिलेंगे. प्रैक्टिस कोड असेसमेंट लाइक कंपनी वाइज जो है प्रैक्टिस क्विज होम पेज में रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन आपको सारी चीजें मिलेंगे. इंस्ट्रक्टर कौन से हैं, लाइक मेंटोर्स कौन से हैं, बात करना चाहते हो आप मेंटोर से, एवरीथिंग. And in the learn section probably you will be knowing more about your curriculum जो आपको दिखाया था सर ने अभी. लाइक आप अगर फुल स्टैक डेटा साइंस में हो, कंटिन्यू लर्निंग पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ सामने आ जाएगा कितने मॉड्यूल्स है. टोटल 7 मॉड्यूल्स होते हैं. दिस इज द फर्स्ट मॉड्यूल, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, देन न्यूमेरिकल प्रोग्रामिंग इन पाइथन, रिलेशनल डेटाबेस, डेटा विजुअलाइजेशन, अप्लाइड स्टैटिस्टिक. सब सीक्वेंशियली. मैंने आपसे एक बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले. what I have told you, suppose if you're looking for learning anything, you should know a roadmap in a very proper way. अगर आपको रोड मैप पता है तो आपको स्टेप्स भी पता होना चाहिए, व्हाट ऑल स्टेप्स यू विल बी टेकिंग गोइंग अहेड. तो ये जो आपको दिख रहा है लर्न टैब के अंदर में, ये जो सीक्वेंसेस दिख रहा है, दिस इज दैट सीक्वेंस जहां से जिस सीक्वेंस में आपकी पढ़ाई होने वाली है, so that you can make yourself learn about all the things in a very sequential manner, because हर चीज interrelated होती है. If you will not study computer programming, probably you will be struggling in numerical programming in Python. Probably you might struggle in certain more modules upcoming days ahead. So how to study, what exactly should be the approach, that is where this learn tabs comes into the picture. Sequentially आप पढ़ते हो और फिर कंप्लीट करते हो. मॉड्यूल 7 इज करियर गाइडेंस वेयर यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट एबी कैट एंड एवरीथिंग, कि कैसे चीजें वहां पे होती हैं. ठीक है. क्लासरूम, अगेन अगर कोई आपकी लाइव क्लास चल रही है, आई मीन एन ओल्ड कोड, दैट इज वाई यहाँ पे कोई क्लास नहीं दिख रही है. कंप्लीटेड सेक्शन में आपको दिखेंगे यहाँ पे क्लास. तो जब भी आप किसी क्लास आपका होता है तो उसका एक पूरा सीक्वेंस रूटीन प्लानर जो होता है, प्लानर आपको इसी जगह पे दिख रहा होता है. इन अपकमिंग सेक्शन में आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि आपके जो भी क्लास है नेक्स्ट 7 डेज में या फिर नेक्स्ट 30 डेज में कितने क्लास है, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी. so that you can plan the things accordingly. जो classes की timing होती है, it is again like in the evening. So somebody who is a working professional in Indian timing or somebody who is a college student, probably this is going to be the best suitable platform again, because आपकी classes जो होंगी 8 p.m. in the evening to 10:30 p.m. तक होगी. Getting my point? Once you'll be getting into practice, this is the most interesting part which I personally feel, because I feel like ki suppose if you're preparing for something, so what you can do over here, you can check out all on all those questions which has been asked in recent days or in recent months. किस किस कंपनी ने क्वेश्चन पूछा है. सपोज करो कि एक्सेंचर से आपका कॉल आया है कि आपका इंटरव्यू होना है या फिर आपका असेसमेंट राउंड है. तो यू कैन सिंपली पुट फिल्टर्स ओवर हियर एंड यू कैन फाइंड कि एक्सेंचर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए इन पास्ट फ्यू डेज. एक्सपीरियंस लेवल यहाँ पे आप फिल्टर्स डाल सकते हो. स्किल्स में आपको डालना है पाइथन पे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो व्हाट यू विल सी, जितने सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं वो रिलेवेंट टू एक्सेंचर वहां पे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, वही आपको यहाँ पे दिखेंगे. गेटिंग माई पॉइंट?
सो दिस इज अबाउट द प्रैक्टिस सेक्शन। प्रोजेक्ट सेक्शन अगेन, जो वहां पे 20 प्लस प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ था इन द स्लाइड, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वहां पे क्यों लिखा हुआ था। व्हेन इट कम्स टू न्यूमेरिकल प्रोग्रामिंग इन पाइथन, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट ईडीए, सो ये सारे इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, 6-7 ऑप्शंस हैं जिसमें से आप कोई सा भी कर सकते हो। व्हेन इट कम्स टू रिलेशनल डेटाबेस, यहाँ पे आपके पास ये एक प्रोजेक्ट है प्रोडक्ट डिसेक्शन का। व्हेन इन डेटा विजुअलाइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग ईडीए टू डैशबोर्ड्स है। मॉड्यूल अप्लाइड मेजरली मशीन लर्निंग में आप देखोगे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे टू डू द प्रोजेक्ट, जहाँ पे जिसका रिक्वायरमेंट ऑन एन इंडस्ट्री लेवल आप देखोगे सबसे ज्यादा है। यू विल बी एबल टू फिगर आउट द थिंग्स कि वहां पे मान लो किसी को टारगेट करना ओटीटी प्लेटफॉर्म को, तो लाइक if they will be doing project on Netflix, that will be helping them out। किसी को जोमेटो में, और लाइक किसी को लाइक जोमेटो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में स्विगी में टारगेट करना है, तो वहां के प्रोजेक्ट्स अगर आप कर रहे हो तो दैट शो केस योर रेलिवेंसी वेन एवर यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब। फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप देखोगे तो यहाँ पे, सो यू विल बी फाइंडिंग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ओवर हियर इन द टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट, सो यू विल बी फाइंडिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स टू डू ओवर हियर। एंड द थिंग इज, 5 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको करने हैं, बट इफ यू वांट टू डू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स प्रोबेबली यू कैन डू। इट इज नॉट समथिंग लाइक दैट वी आर गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग द प्रोजेक्ट्स, नो। जितने प्रोजेक्ट्स आपको आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, यू कैन डू इट। ओके, let me take question once, Rehan. Sir, in the starting there were 3 to 4 more optional specialization module where there in which we have to select any one module, but it has been removed. Rehan, first of all, complete your foundation, and then you'll be able to see. Before completion of foundation, you'll not be able to, because dashboard structure has been changed. It has been restructured. So like things has been changed in comparison to what it was used to be earlier. So definitely you'll be getting to learn all those things related to deep learning and all, but first of all complete your foundation, and then only you'll be able to access all those things. Okay, then करियर में यहाँ पर जब आप अल्मा एक्स में जाते हो, अल्मा एक्स की जर्नी कैसे होती है। फॉर मी सपोज इट इज सोइंग अवेलेबल टिल 3rd of August, तो यहाँ पे आपको ना आपका डेट दिख रहा होगा व्हेन बाय व्हेन यू आर एलिजिबल। ये एलिजिबिलिटी की मतलब क्या होती है, बिफोर दैट यू हैव टू टेक योर एबी कैट, यू हैव टू क्लियर योर एबी कैट। आपको एबी कैट को उसके पहले क्लियर करना है। वंस यूल बी क्लियरिंग योर एबी कैट, आप अल्मा एक्स में चले जाओगे। ओके, वंस यू एंटर इनटू योर अल्मा एक्स, प्रोबेबली आपकी 8 वीक्स की ट्रेनिंग एंड ऑल सारी चीजें रिलेटेड टू प्लेसमेंट शुरू होंगी। ओके, सो दिस इज अबाउट करियर। मेंटोरशिप सेशंस के बारे में जो मैं बता रहा था, अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, एंड मेंटोरशिप सेशन विच आई पर्सनली फील एवरीबडी शुड अवेल दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी। मेंटोरशिप सेशन हमेशा आपको किसी भी डायरेक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए हेल्प करता है। मेंटोरशिप सेशन हमेशा आपको हेल्प करता है राइट डायरेक्शन में रहने के लिए। मेंटोरशिप सेशन आपको हमेशा हेल्प करता है कि आप अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे करो, मतलब आप अपने टाइम बचा करके बेटर प्लेस पे कैसे पहुंचो। यहाँ तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस, जिस भी रीजन से आपको मेंटोरशिप सेशन चाहिए, यू कैन मेंशन इट ओवर हियर एंड पीपल कैन कनेक्ट। यहाँ पे नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, आप अपने 3 डिफरेंट स्लॉट, मतलब आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से यहाँ पे टाइम एंड डेट डाल सकते हो, सो दैट पीपल कैन कनेक्ट विथ यू एंड दे विल मेक यू लर्न अबाउट ऑल दोस थिंग्स। जॉब बोर्ड अगेन यू ऑलरेडी नो अबाउट, बिकॉज सर ने भी बताया कि ये सारे के सारे वो इन्फॉर्मेशंस होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं होते या फ्रेशर्स, तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो 0 to 2 years के लिए कौन सी वैसी कंपनीज है जो हायर कर रही हैं। सपोज माइक्रोसॉफ्ट है, तो ये सारे के सारे सोर्सेज से एक जगह पे गैदर किया गया इन्फॉर्मेशन। अगेन इट इज अ काइंड ऑफ एफिशिएंसी फॉर अल्मा बेटर। मान लो कि आप 10 प्लेटफॉर्म पे जाके जॉब सर्च कर रहे हो, इट इज टेकिंग टू मच ऑफ टाइम, बट हियर इन अंडर जॉब बोर्ड सेक्शंस फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यू कैन सी ऑल दोस थिंग्स आउट हियर। ये तो आप अभी भी देख सकते हो। सो आपको इससे क्या आइडिया लगेगा कि कौन कौन सी वैसी अपॉर्चुनिटीज है उसमें। अगर आप डिटेल्स में देखोगे थोड़ा सा जाकर के, नो मोर, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इन अ कैंडिडेट, उनको क्या चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शंस रहेंगे, एंड यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए रहेंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्वालिफिकेशंस है। मास्टर्स और पीएचडी डिग्री जो होता है, ये मेजरली आप देखोगे तो जो भी टियर 1 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है या टियर 2 होती है, वहां के लिए मास्टर्स प्रेफरेबल एक डिग्री होती है, दैट इज वेयर मास्टर्स कम्स इनटू द पिक्चर एज वेल। तो ये इससे क्या आइडिया मिलता है कि आप यहाँ से ना इंडस्ट्री ओरिएंटेड बन सकते हो, टारगेट कर सकते हो कि इंडस्ट्री में क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है। क्योंकि देखो,
जब भी आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपको हमेशा दिमाग में ये रखने की जरूरत है कि आप किसी ना किसी इंडस्ट्री के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, वहां पे आपको जॉब चाहिए। तो आपको इस बात की अवेयरनेस हमेशा रहनी चाहिए कि वहां पे उनको क्या चाहिए मेरे से। सपोज इफ आई एम गोइंग एज अ कैंडिडेट ओवर देयर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उनको क्या चाहिए, उनको कौन सी वैसी क्वालिटीज चाहिए। सपोज इफ दे आर आस्किंग अबाउट मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग में क्या चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ। सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। देर इज देर इज एन ऑप्शन, यहाँ पे सारे के सारे डिटेल्स आपको बहुत अच्छे से मिले हुए रहेंगे, सारे इंफॉर्मेशन। देन रेफर एंड अर्न, again students at alma better knows about it. Refer and earn is something like, suppose if you guys have joined alma better today in this particular session, but in your peers, in your colleagues, if there are some people they do not know about it, or like if you feels like this is a suitable program for somebody else, you can refer them and you can earn a direct cash as well, यहाँ पे up to 2 lakh rupees तक। definitely it will get explained to you. So this is about alma better community में आप अगर जाओगे तो community is something जहाँ पे you will be able to know about कि किसका प्लेसमेंट्स कहाँ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, एंड आप उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। वन ऑफ द मेजर फैक्ट अबाउट अल्मा बेटर इज अल्मा बेटर डैशबोर्ड का एक्सेस जो होता है, इट इज गोइंग टू बी योर लाइफ टाइम एक्सेस। इट इज नेवर गोइंग टू बी टेकन ऑफ, बट येस देर इज एन एलिजिबिलिटी फॉर एबी कैट और अल्मा एक्स। So again, whenever you joined any particular organization, आप किसी चीज की क्विकली रिवीजन चाहते हो करना एंड ऑल, आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप वो कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? अप टिल नाउ एनी क्वेरीज, एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क? All good? Can I get a thumbs up? Should we should we proceed, guys? Can you please give a thumbs up? Are you able to hear me? Guys, am I audible? Can I get a quick yes on chat or thumbs up, please? Okay, great. Thank you for confirming. कभी कभी लगता है ना like मेरी आवाज ही नहीं जा रही. So keep me posted with all those things. So moving ahead, I'll be making you explain about the same again. So this was a dashboard walkthrough which I have taken you through, and then like again, mang 15 is a coupon code. Suppose if you're trying for any product based companies and all, probably you can use this coupon whenever you're talking to a counselor or like anybody at alma beta. If you want to enroll, you can inquire about. If you want to enroll like for certifications, even holy offer is also going on, so you can connect with the people. Just try to understand what it is all about, and if you feels like yeah something can be discussed further, and like if there is some concern, probably you can tell. So this is all about the session, and probably for the next 4 to 5 minutes we'll be taking any questions if you guys are having. I'm open to answer, or like you can simply fill up this form which like Krishna has posted over here, so that you can get some guidance in person to person basis from us. Or if you guys want to reach me out directly, I'm posting my number and mail over here, so you can text me on WhatsApp. Rehan, do text me so that I can understand your problem as well. In case if anybody is having any query, feel free to ask. Or like if you guys want to have one-to-one discussions, probably you can fill up that form, or you can reach me out directly on my WhatsApp number as well, so that we'll be able to understand and figure out the best possible resolution for you guys.
We'll be waiting for another 2 minutes. If there is no any question, probably we'll be winding up this session. So if there is, probably I'll be asking you to post it in the chat or in Q&A. I guess nobody's having any question. Probably everybody is clear about the things. So, in case if you guys want to know in a bit more detailed manner, so you can connect with us, or like in case of any additional help is required, probably all the information is present over here. You can simply reach us back. So, winding up this session for today. Happy Oli, guys, and stay healthy and like stay tuned for another sessions as well. Bye bye.